हेलो 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 वेलकम वेलकम। कैसे हो भाई सब लोग? वेलकम बैक टू ऑलमाइटी ब्लूज एफसी, अ फैन चैनल फॉर ऑल टू सी। एंड आई नो देयर इज भाई बहुत सारा न्यूज़ है, इसलिए हम डेली आ रहे। एंड यस, वी आर लिटरली कमिंग डेली, नॉट जस्ट अभी बट हमेशा से, as always, whether season is going or not going. But welcome everyone. भाई Z भाई is going to join in just a couple minutes. He's in middle of something, तो भाई वो join करने वाले in just a couple minutes. तो भाई हमें बहुत सारा डिस्कस करना है। सब लोग जल्दी से लाइक बटन दबा दीजिए। वेलकम एवरीवन। मैं देख रहे थे हम लोग देख रहे थे कमेंट्स। इनफैक्ट यहाँ पर आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ सीइंग, अनमोल सेइंग वन थिंग, रेड ओपी सेइंग वन थिंग, हसीब भाई बिग अप, मेसी गुड, मेसी गोल एज वेल, स्पोर्ट फ्रीक इन द हाउस, प्रेडेटर गेमिंग भाई शाउट आउट आप लोगों को एब्सोल्युटली, एज वेल एज मिलनो एंड डाई। भाई बहुत लोग आ गए भाई, सब लोग let's hit that subscribe button as well if you're new to the channel. Absolutely, we are, I think, what about 65 subscribers away from 9k. And remember bhai, the mission is to get to 10k this summer. Before the new season begins, we have to get to 10k and hopefully 9k by the time this season ends. वो हो रहा है literally next week. तो कम ऑन, इस वीकेंड तक हमें करना है 9k. कम ऑन माय ऑलमाइटी फैम भाई सब लोग। मुझे भाई द हाउस क्लीन शेव्ड, अंकित इज गेटन नूडल है रोनाल्डो। अरे भाई साहब आई फील यू नो भाई देखिए, बहुत बार मैं बोलता हूँ दैट ट्रांसफर विंडोज में भाई थिंग्स कैन, मतलब पलट हो सकती है इन अबाउट 24 आवर्स, एंड दैट्स हाउ समटाइम्स थिंग्स आर। जो हमने खुद ही कवर किया था लास्ट 2-3 डेज में ट्रांसफर स्टोरीज में, कहीं ना कहीं दैट मेसी टू सऊदी इज मोर लाइकलियर, एंड अभी भी यार देयर इज अ हाई चांस। ऐसे नहीं कि यार उसने डिसाइड कर दिया, फॉर पीपल हु माइट थिंक लुकिंग एट द थंबनेल, बट क्वेश्चन मार्क है। बट साथ साथ में इट इज अ फैक्ट। अब यहाँ न्यूज ऑब्वियसली आया, बड़ा न्यूज क्या है इन द लास्ट कपल ऑफ आवर्स, वी ऑल नो, काइंड ऑफ वी ऑल न्यू दैट, लेकिन ऑफिशियल हो गया। ऑफिशियल क्या हुआ है दैट मेसी इज नॉट गोइंग टू कंटिन्यू विद पीएसजी। ठीक है, तो एक चीज तो करेक्ट हो गया, जो प्रेडिक्ट किया था अपने जेरार्ड रोमेरो ने। और मैं हमेशा बोलता हूँ जूरी इज आउट कहीं ना कहीं, एज मच एज मैं तो भाई सभी सभी लीग फॉलो करता हूँ, बिग अप टू ऑल द लीग्स एंड ऑल द जर्नलिस्ट, लेकिन मुझे लगता है कभी कभी यार ही डज इट फॉर द क्लिक्स समटाइम्स आई फील। लेकिन अगेन इस बार आई कैन नॉट से इज रॉन्ग, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ही गॉट इट राइट एज वेल। उसने बोला था जनवरी में, he was one of the first people, जहां तक मुझे याद है, दैट वो पीएसजी में कंटिन्यू नहीं करेगा, एंड दैट इज व्हाट बेसिकली हैज हैपेंड। यहाँ पर फेब्रिशियो रोमानो ने भी कंफर्म किया है ये, जस्ट सो यू नो। एंड यस, यहाँ पर एक कमेंट जो है, एब्सोल्युटली आई एग्री विद दिस कमेंट कहीं ना कहीं। लेकिन वही है, देखो जर्नलिस्ट ना, बहुत कम जर्नलिस्ट होते हैं हु गेट एवरीथिंग राइट, बट एट द सेम टाइम बहुत कॉन्फिडेंस से बोल रहा है बंदा, तो देयर इज मोर टू इट एब्सोल्युटली। लेकिन डज दैट पेव द वे टू बार्सिलोना? नो, नॉट रियली। बार्सिलोना में ऑब्वियसली वी नो दैट यहाँ पर सैलरी कैप है, वहां व्हाट विल बी द थिंग, कहीं ना कहीं बार्सिलोना हैव टू रिड्यूस द ओवरऑल वेजेस। तो उसके लिए दे हैव टू ईदर सेल प्लेयर्स, और एट द सेम टाइम बार्सिलोना को और ला लीगा को अलाउ करना है अ सर्टेन लेवल ऑफ वेजेस फॉर मेसी टू कम इन। और हम सब जानते हैं, as much as he loves Barcelona and he wants to be there, he recently met his friends, of course, Sergio Busquets, who basically, you know, obviously saw his last game in Barcelona, and not just that, a lot many others as well. तो मुझे लग रहा है that obviously मन तो है मेसी का जाने का। जावी भी clearly saying that no, it is about the ball is in Messi's court and of course La Liga's court. तो I think कहीं ना कहीं it's clear that Barcelona are definitely ready with that contract. It's all about putting that contract through. वो literally उसके पास है 15 दिन अब। 15 days is what we are talking, is what I understand, because in 15 days either way decision होना है। He doesn't want to leave it till late August, and that is the deal right now. बट आज क्योंकि जेरार्ड रोमेरो ने बोला है जनवरी में, और जो सच हो गया फाइनली अबाउट पीएसजी, दैट इज ऑफिशियल एज वेल, दैट फेब्रिशियो आल्सो कंफर्म्ड अर्लियर, रिमेंबर। तो आई थिंक कहीं ना कहीं जेरार्ड रोमेरो जो बहुत कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं इन द लास्ट 48 आवर्स माइट बी आल्सो ट्रू अबाउट द ला लीगा एक्चुअली अलाउइंग दैट पर्टिकुलर मार्क जो है सैलरी का, और वो क्लियर होगा बाय मंडे, एंड दैट इज व्हाट द ऑफिशियल न्यूज इज। अभी तक क्लियर नहीं किया है, but there is high expectation coming from Gerard Romero and team that basically there will be a clearance by Monday and the official offer for Messi is ready. अब meanwhile he is obviously keeping Al-Hilal in waiting, वहां पर Benzema भी in waiting रख रहे हैं, but Benzema का more or less I think अभी हो रहा है towards Al-Ittihad. So that is how things are. But yes, this looks like it's done. Looks like it again. हमने कल बात ही की थी डिटेल में, और already it was looking like it is done. ऑलवेज रिमेंबर द यूनिवर्सल रूल, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। बिल्कुल भाई, हसीब जो बोल रहे,
भाई सब लोग again we are about 65 subscribers away from 9k and hopefully we get to 10k next month and this week we get to 9k absolutely भाई come on अरे thanks man सादिक भाई को बुलाएंगे यार he's been busy I know कहीं ना कहीं टाइमिंग नहीं बैठ रही मेरी सादिक भाई को तो big up to सादिक भाई but I did call him a few times as well but कोई नहीं यार anyone and everyone who kind of knows this stuff are welcome you know that absolutely summer it's a fan channel for all to see जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ for a reason not just like that right लेकिन क्या बोल रहे हैं भाई बाकी लोग इन द हाउस एंड यस आई एम जस्ट वेटिंग फॉर जी भाई एंड देन वी विल डिस्कस बाय द वे कल का मैच भाई थोड़ा सा बात करना पड़ेगा आई नो ला लीगा फैंस इन द हाउस तो भाई सेविया गेटिंग देयर 7th यूरोपियन कप एंड दैट इज एब्सोल्युटली क्रेजी यूरोपा लीग भाई एकदम ही नेक्स्ट लेवल है बट कंट्रोवर्शियल सर्कमस्टेंसेस में थे कि नहीं क्वेश्चनेबल है अब मैंने वॉच अलोंग किया था फॉर पीपल हु डू नॉट नो वी हैव अ सेकंड चैनल एज वेल यहां पर जो भी देख रहे वी डू न्यूट्रल वॉच अलोंग्स ऑन सेकंड चैनल ऑलमाइटी स्पोर्ट्स वहां पर बाकी स्पोर्ट्स भी हम कवर करते हैं तो चेक इट आउट एज वेल वहां क्रिकेट फुटबॉल एंड लॉट ऑफ थिंग्स यहां पर हम करते हैं 100% फुटबॉल लेकिन यहां पर वी काइंड ऑफ स्पीक टू कीप इट मोर टू डिस्कशंस तो भाई वहां पर हमने क्या डिस्कस किया था दैट इन माय पर्सनल ओपिनियन रेफरी एंथनी टेलर अपना इंग्लैंड का भाई पथेटिक रेफरी एब्सोल्युटली बुलॉक्स लेकिन साथ साथ में ये भी बोलूंगा सेविया विनिंग काइंड ऑफ डिजर्व्ड my man Suso was an ex AC Milan player आपको पता ही I have a soft corner hopefully लेकिन not just that I think beat Navas beat basically or Ocampos beat Rakitic भाई Barcelona legend I think these all players were brilliant on the night yes काफी येलो कार्ड मिस किए सेकंड येलो कार्ड भी मिस किए इन माय पर्सनल ओपिनियन एंथनी टेलर ने लेकिन वुड दैट चेंज द गेम पॉसिबली यस पॉसिबली नॉट लेकिन पेनल्टी नहीं थी इन माय ओपिनियन सो अगेन बिग अप टू ला लीगा भाई नेक्स्ट सीजन चैंपियंस लीग में 5 टीम्स होंगे रियल सोसिएडाड there is obviously Sevilla now and there is of course Atletico Madrid Barcelona and Real Madrid and that is what it is I guess मैं कमेंट लेने वाला हूँ कुछ how do you manage work in so many podcasts in a day बिल्कुल भाई अभिजीत I try to do my best लेकिन again with all due respect भाई we try our best single-handedly लेकिन if the almighty fam supports us which they obviously are already it helps even more so definitely let's get to the next level and let's get to 10k on this channel and 5k on almighty sports as well as TFHD or talk football ET ko bhi OPR absolutely Benzema and Al-Ittihad wow exactly that's what हमने कल भी बोला था भाई we talk football in the house he's a PSG fan but he knows his stuff inside out a Messi fan as well I'm sure अरे emojis नहीं आ रहे membership खत्म मेरी will renew जल्दी भैया go no problem do it as soon as possible लेकिन big up to you absolutely यार Fabricio Romano is a person who can predict my death अनुपम मित्तल बोल रहे अरे TCS भी in the chat यार भाई क्या हाल है भाई again we did discuss Real Madrid detail में looks like it's come true यार Benzema का कल हमने जो किया था that is how it is but एक second there is news that not excited about the idea of living in Saudi so do you think this might affect Messi's decision now and future regarding Saudi I think there's no मतलब even a question mark यार अमन कहीं ना कहीं I think let's be real about it as much as Saudi मतलब generally Middle East is great to live in but compared to basically a place where he is born brought up almost born मैं बोलूंगा भाई literally एकदम like a kiddo he came here Messi obviously he'll be more comfortable living in Barcelona yeah that's what I would say there's no two ways about it like in terms of him and his family pretty sure on that लेकिन अरे भाई talk about Messi and here is another goat आ गए भाई जी भाई welcome क्या हाल है Thank you Ankit bhai for having me here sorry थोड़ा सा late होने की वजह से कुछ complications हो गए थे but I'm over here ऑलवेज वेलकम तो भाई जी भाई हम मेसी पर तो डेफिनेटली आएंगे ही एंड विल कम टू बेसिकली हाउ द बार्सिलोना ट्रांसफर्स आर लुकिंग लाइक हाउ द सीजन हैज बीन व्हाट आर द इंप्रूवमेंट्स आप देख रहे हो मतलब वो तो टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं लेकिन ये क्लिफर्ड बिग अप यार सेविया के बारे में भाई बोलना पड़ेगा मतलब 7th आई नो मतलब थोड़ा कंट्रोवर्शियल एट टाइम्स यू कैन से बट आई थिंक दे प्रीटी मच डिजर्व्ड इट राइट आई डोंट थिंक यू कैन से दैट दे डिडंट डिजर्व No, you can't say that they don't deserve it. Definitely they deserve it for what they have done in yesterday's game. मतलब उनके ऊपर नहीं है कि रेफरी के डिसीजन थोड़े से इधर-उधर गए. They did their part. They had no role playing in influencing the referee or whatsoever. So yeah, obviously hands down by Sevilla deserved it. The way they played, in my opinion, they should have won it even earlier. वो तो यहाँ पे रोमा है. They did put up a very good defensive show. तो man. Incredible. I wasn't rooting for them. मतलब actually I was just hoping कि भाई एक अच्छा गेम देखने को मिले. But जिस हिसाब से it all turned around मतलब मजा आ गया भाई. Absolutely. और भाई from a La Liga perspective, 5 clubs in the Champions League next season. भाई
मतलब is it a season मतलब coming back कहीं ना कहीं it's been alternating chat. I don't know what do you guys see. I know very early predictions अभी तो transfer window बाकी है, pre season बाकी है, lot of things to go. लेकिन कहीं ना कहीं obviously my club Chelsea is not there. Milan is definitely there. That I'm happy in the Champions League. लेकिन what do you think about La Liga generally? Back to where they belong. You think? No, not really. Not Not yet. really, because not yet. पैसा पैसा बोलता है right? पैसा Mainly that's पैसा the main बोलता issue. है, अभी डिपेंड करता है कि ये कौन सी साइनिंग करने वाले हैं, बिकॉज इट इज अ गल्फिंग क्लास डिफरेंस। अंकित भाई, यू हैव सीन कि जितना प्रीमियर लीग ने स्पेंड किया है, जितना बाकी लीग्स ने स्पेंड किया है, ला लीगा ने लेटली इतना स्पेंड नहीं किया है। ला लीगा ने अपनी टीम्स को, बाकी क्लब्स ने अपनी टीम्स को इंप्रूव नहीं किया, बिकॉज दे वर स्टक विद दैट एफएफपी रूल, जिसकी वजह से दे वरंट एबल टू मेक दोस साइनिंग्स। हम फ्रिंज प्लेयर्स Mhm. उठाते हैं इधर उधर से, ला लीगा की टीम्स आप भी देखोगे ना, फ्रिंज प्लेयर्स उठाते हैं। दे हैवंट बीन एनी बिग साइनिंग्स और समथिंग अपार्ट फ्रॉम बार्सा एंड मैड्रिड। एथलेटिको पता नहीं हाउ दे विल इंप्रूव देमसेल्व्स। यू कुड से कि यस, uh, बाकी टीम्स ऐसे सॉसिडाड है, दे हैव डन वेरी गुड। बेटिस हैव केप्ट देमसेल्व्स, बेटिस बेटिस हैव केप्ट Same देमसेल्फ vibe, इन bro. द यूरोपा हाँ. अगेन। सो थोड़ा सा लगा हुआ है यहाँ पे रेट्रो। या भाई देखो मतलब यहाँ पर एक कमेंट लेना चाहता हूँ भाई. यू ऑल नो दैट माय मैन जोसे मोरिन्यो ब्रो, मतलब लव हिम टू कोर टू बिट्स एंड नॉट जस्ट एब्सोल्युटली। मी यार. आई एम प्रीटी श्योर जी भाई, एनीवन इवन लाइक जनरली हु इज अ ला लीगा फैन एंड जनरली एक फुटबॉल फैन यार, ही इज इन दैट कैटेगरी. पेप, जोसे, आई थिंक सर एलेक्स, मतलब दीज आर डिफरेंट कैटेगरी नाउ. मतलब एनीवन एंड एवरीवन will probably back them क्योंकि he's a different manager, different kind of a personality. Messi is good, लेकिन I think he's experienced enough to sometimes know. ये जरूर खुद से बोलूंगा that मतलब पेनल्टी डिसीजन वाज डिबेटेबल. मैंने उसके बारे में पोस्ट भी किया था. इट्स नॉट अ क्लियर कट. हाँ मतलब यू कैन आर्ग्यू इफ यू आर अ टीम जहां पर आप एक्सपेक्ट करो पेनल्टी, यू वुड प्रॉब्ली बी डिसहार्टेंड. लेकिन अगर आप डिफेंड करो यू विल से नहीं नहीं यार वो हाथ ले रहा था. ऑन द अदर हैंड द येलो कार्ड्स आर क्वेश्चनेबल यार भाई. आई डोंट थिंक इट वाज द काइंड ऑफ गेम जैसे रोमा के मतलब 6-7 येलो कार्ड हो गए, मतलब इतने सारे. इट वाज नॉट सच अ गेम एज एंथनी टेलर वी नो इज अ एक्चुअली अ डिसग्रेस यार. मेसी इज गुड, वो तो मैं अग्री करता हूँ. He is a disgrace, Anthony Taylor. That, मतलब, I don't know, Zeebai, what do you have to say about that? Not a huge fan of Anthony Taylor, but कल के मैच में Exactly. I think Anthony Taylor had to do it, had to cement himself as the protagonist, और कई बार होता है ना, रेफरीज दे वांट टू जस्ट लेट द प्लेयर्स नो कि भाई यू कांट गेट अवे विद एनीथिंग, इट्स अ फाइनल, सो आप ऐसा नहीं है कि कुछ भी करोगे सो आई लेट यू बी फ्री। सो ही Mhm. वाज जस्ट गिविंग द येलो कार्ड्स लेफ्ट राइट सेंटर, एंड हाँ, काफी ज्यादा लाइक रोमा के प्लेयर्स को काफी ज्यादा येलो कार्ड्स मिले थे। आई थिंक 7 या 8 मिले थे, जोस मोरिनो को भी मिले थे, राफा मिर को Exactly. बेंच भी येलो कार्ड मिले हुए थे। सो इट्स नॉट जस्ट रोमा। सो डिसीजंस थोड़े से डूबियस थे, बट आई थिंक ही वांटेड टू इंस्टेट और assert himself कल के मैच में, रेफरी टेलिंग द प्लेयर्स कि भाई यू कांट गेट अवे विद एनीथिंग। एंड हाँ, वो डिसीजन अबाउट द पेनल्टी कैन बी, मतलब डिबेटेबल है, यस। हाँ मतलब आई हैव सीन मतलब सच काइंड ऑफ पेनल्टीज बीइंग गिवन, अंकित भाई, इधर वेज ऑनेस्टली। वाला चीज है, वही है या मतलब या 19-20 वाला मामला है वो. मेरा वही था यार, कहीं ना कहीं एंथनी टेलर इज द काइंड ऑफ गाई जो कभी कभी बहुत ही मतलब पोलराइज्ड व्यू रखता है वो. मतलब या यू गॉट टू बी बेसिकली वेरी सब्जेक्टिव, वो बहुत ही ऑब्जेक्टिव रखता है, व्हिच इज नॉट समटाइम व्हिच व्हाट फुटबॉल वर्क्स. अनफॉर्चुनेटली दैट्स हाउ या इट इज राइट, क्योंकि वो रूल ही या ऐसा है अनफॉर्चुनेटली. लेकिन अगेन भाई बिग अप टू मंत्रा, बट मैंने आपका स्टार कर दिया कमेंट क्योंकि वी आर डूइंग ट्रांसफर टॉक्स एज वेल. किमिक का यस डेफिनेटली बात करना है for sure. I'm not too sure about this news that Mantra brothers quoting, but we'll definitely talk about that in detail कि क्या domino होने वाले. But let's be real भाई, as much as बहुत सारी चीज बात करने, I think first things first is obviously the Leo Messi factor. यहाँ पर Messi is good ने भी एक दिया था in terms of the news, and these are all quotes right. Again मतलब how reliable it is you can question, but at the same time भाई अजी भाई, Gerard Romero, the guy said, and I think he was one of the first जो बोला था कि PSG में नहीं ठहरने वाला. हो गया भाई सच. I know kind of we knew it till about last month, लेकिन he was one of the first, wasn't he? So या should we या या believe the Messi news that he's saying in the last 48 hours about La Liga cap? whatever he has said up tak has come true, Ankit bhai. Whatever he has Hmm. said about Messi leaving, about Barcelona's financial wage plan, about La Liga calling George Messi and stuff, everything is true. मतलब हाँ, मतलब स्पेन का मीडिया, like particularly for Barca, Real Madrid, काफी हाईली एक्टिव रहता है, एंड जेरार्ड रोमेरो को थैंक्स है यहाँ पे टू कीप अस अपडेटेड विद एवरीथिंग दैट इज गोइंग ऑन। अदरवाइज तो यार हम तो यहाँ पे घर पे बैठे बावरे हो रहे होते। तो जेरार्ड रोमेरो एटलीस्ट थैंकफुली टेलिंग अस व्हाट इज गोइंग डाउन। और अभी भी वही लेटेस्ट रिपोर्ट्स वही चल रही हैं दैट वायबिलिटी प्लान एक्सेप्ट होगा, और मंडे को कंफर्मेशन आएगा अबाउट दिस। एंड Correct.
वही है। अभी हाँ, एक और रिपोर्ट आई थी आज, व्हेन आई वोक अप आई रेड अबाउट दिस कि यार बार्सिलोना को अगेन यूएफा इज पेनलाइजिंग देम कि इन्वेस्टिगेशन एक चलेगी अबाउट द नेग्रेरा केस, दे कुड बी बैंड फ्रॉम चैंपियंस लीग, दे कुड बी रेलीगेटेड, स्टफ लाइक दैट। ये सारी फुद्दू चीजें चल रही हैं काफी। बार्सा हैज अच्छा, डिनाइड ऑल ऑफ तो दीज दिस डूइंग्स। इज अगेन मतलब आज की एक्चुअली न्यूज़ है। मतलब कहीं ना कहीं दिस वाज नॉट लाइक अ क्लोज चैप्टर अलॉन्ग विद मे बी द मैन सिटी चैप्टर एज वेल, तो मतलब देयर कुड बी समथिंग कमिंग इन फ्रॉम द चैंपियंस लीग पर्सपेक्टिव अगेन। मतलब ऑब्वियसली बारसा फैंस तो वुड नॉट लाइक एनीवेयर क्लोज टू इट, लेकिन अभी भी यार इट्स इतना जल्दी तो नहीं सॉर्ट होगा, नहीं जी भाई, आई डोंट थिंक नहीं, इट्स I think Ankit bhai, the thing is कि Messi doesn't want to delay stuff. जैसे रिपोर्ट्स है ना, Messi want to sort it out because उसकी priority sure है उसको। like what the conversation went down yesterday, जो जॉर्ज मेसी और लालिगा के बीच में हुई कि भाई अपन का ये जो प्लान है टू कम एट बारसा इज देयर, ये परमानेंट, ये प्रिवेलेंट है, तो यू हैव टू एक्ट ऑन इट। अगर इफ यू विल एक्ट ऑन इट, यू विल सेंड अ कॉन्ट्रैक्ट। आई थिंक decent enough contract है which they have already talked about, and there are people जो कि वहाँ बैठे हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बातचीत करने के लिए, एक परफेक्ट कॉन्ट्रैक्ट मेसी के बनाने के लिए। सो it's just about the acceptance from La Liga, and Barca will send a contract to Leo Messi. It's just a matter of waiting, थोड़ा सा hold on Leo जो हम कह रहे हैं यहाँ पे। So exactly, Romero can get your crushes मुझसे chat। भाई ब्रो। बढ़िया है, बढ़िया है। भालो कांटेक्ट कर लो भाई रोमेरो को। यस So एब्सोल्युटली भाई, गौरव आपका भी मैं स्टार करेगा भाई। अगेन पीपल काफी लोग देख रहे हैं हमें, लेट्स हिट दैट लाइक बटन, एंड अगेन बिग शाउट आउट टू टॉक फुटबॉल ईटी एंड टॉक फुटबॉल एचडी। भाई टॉक फुटबॉल ईटी एंड ऑलमाइटी ब्लूज आर वेरी क्लोज टू 10K, सो लेट्स गेट देयर गाइस, लेट्स गेट टू 10K साथ में। और ऑफ कोर्स टॉक फुटबॉल एचडी, यू गाइस नो, इन केस आपको सब्सक्राइब करना भूल गए भाई, लेट्स डू दैट एज वेल एज आवर चैनल हियर। बट रोमेरो फोन टैप करता है उसके पास खुद का बिग बॉस का सेट है, कैमरा एवरीवेयर वो एक्चुअली। जवाब था क्या जावी का? जवाब ही था ना ऐसे कुछ कि भाई यस साले यस यू बास्टर्ड। वो आ, पूछता है ना जावी से कि अनाउंसमेंट कमिंग सून, तो कहता है यस यस यू बास्टर्ड। I was going through those tweets ना, मतलब it was very या funny bro, वेरी as फनी। at some point वो लग रहा है कि रियलिस्टिकली हुआ होगा, मतलब ऐसे कोई बनाकर हाँ नहीं हाँ, डाला है, नहीं नहीं नहीं, मतलब इट वो सीम्स लाइक इट। कन्वर्सेशन हुई है वहां पे क्योंकि कल सेरेमनी चल रही थी ना अबाउट बुस्केट्स, तो ऑल ऑफ दीज गाइस केम एंड जेरार्ड रोमेरो भी वहां पे रहे होंगे, तो ही हैड अ टॉक एंड दैट वाज दैट मैन। फनी है। Absolutely. But लेकिन again मतलब again Xavi did talk about basically how Messi would fit in the team. मतलब एक difficult question for everyone. I know कहीं ना कहीं मतलब keep apart the Messi, what Messi is to Barca factor or what Barca is to Messi factor. Considering कि Sergio Busquets is obviously left or leaving, right? And you have obviously Gerard PK as well as Jordi Alba leaving. I think Sergio Busquets obviously is a big miss वो एक position में in terms of the starting 11. That position is the most important for Barcelona. Will that be fair to say for you to fill इस summer में? अंकित भाई, दिस इज व्हाट आई हैव बीन सेइंग अपने चैनल पे कि हाँ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन फॉर बार्सिलोना इज द इंटीरियर रोल। वो जो दो okay. इंटीरियर मिडफील्डर्स हम खिलाते हैं, एंड दैट वाज said prior to Busquets announcing that he's leaving. But now that now that Busquets is leaving, honestly मेरी priority change हो चुकी है। Pivot की position is the most important position right now जो हमें improve करना है। Otherwise Barca Exactly. won't be able to play their style of football. Hmm. Absolutely sure about that. Or the double pivot is not something that you see मतलब what the Barca has actually played the best football in, right? मतलब would that be fair to say as well? Well, it's like an orientation when we build एक transition के time पे ये like often Correct. build करते हुए you go in a double pivot, but जैसे ही आप mid thirds में पहुंचते हो ना, जैसे आप Hmm. transition कर लेते हो ना, तो it again becomes a single pivot जहाँ पे Busquets deep रुकते हैं and De Jong and further Pedri Gavi ऊपर push करते हैं, so it kind of starts when building up the play in a double pivot जहाँ पे दो Hmm. players आपके पास passing option होते हैं, जैसे a lot of teams, Brighton, City, Arsenal, even Real Madrid, they do that. They have multiple options to build the play up, and then जैसे वो एक प्ले ट्रांजिशन होता है क्योंकि फ्रैंकी डियोंग हैज गॉट द क्वालिटी दैट ही कैन रन फॉरवर्ड, तो ही डज दैट, तो वहां पे बुस्केट्स टेक्स द सेंट्रल रोल एंड देन ही Hmm. डियोंग गोज फर्दर। तो यहीं पे क्योंकि यू डोंट हैव बुस्केट्स, यू डोंट हैव अ क्वालिटी ऑफ अ प्लेयर जो कि ट्रांजिशंस पे, डिफेंसिव ट्रांजिशन पे ही विल बी ready to break those Hmm. lines, he'll be ready for those interceptions. Nobody in the team possesses the quality that Busquets has, तो सबसे बड़ी priority है to get a DM.
on the sooner you get a new player is better, क्योंकि let's be honest, as much as आप फ्रेंकी के साथ ट्राई करो, he's not that guy. हाँ, मतलब फ्रेंकी has a lot, वहां पर कहीं ना कहीं you're taking away the good attributes that Frankie has, which is एग्जैक्टली। again with all due respect to Busquets, that's different, right? ऐसे नहीं बोल रहा अच्छा है बुरा है, it's या just about a different set of qualities that he has, so why take that away? और या Frankie definitely starts note, और भाई देवेश is a Manchester fan, ये डायरेक्टली बोल रहा हूँ, फ्रेंकी इज नॉट कमिंग, और मैनचेस्टर पे आएंगे, मैं मेरा मुझ बहुत खुन्नस है भाई देवेश, बिग अप टू यू, लेकिन यू गाइस नो एग्जैक्टली व्हाई अ चेल्सी फैन इज सेइंग दैट टू मैनचेस्टर फैन राइट कम नाउ, ऑन वी मैन। विल कम टू दैट फॉर श्योर, लेकिन भाई चेल्सी यहाँ पर चेल्सी एक मिनट अंकित हाँ भाई, बोलिए। क्या क्या चल रहा है? मतलब माउंट को आप बेच रहे हो, आप फिर आशिक को बेच रहे हो, यू आर गोना गो फॉर उगाटे, जो कि इन माय ओपिनियन वुड बी अ परफेक्ट फिट फॉर एंजो एंड एंजो भाई इन द पूरा मिडफील्ड। खाली कर रहे हैं अपन, खाली एंजो, बाकी उगाटे भी न्यूज आ रही है कि द सैलरी वी आर ऑफरिंग इज नॉट हैप्पी, वेयर एज ऑन द अदर हैंड माउंट का द मनी दैट वी आर कोटिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड 80। इज नॉट हैप्पी, और अरे भाई 80। कोवाचिच, हाँ कोवाचिच, भाई मेरा पॉइंट यही है, मैं क्विक समराइज करता हूँ, वहां पर हाँ। आप एक ही समर में, और सेम प्रॉब्लम ऑफ पिच किया था भाई टॉड बलियनको ने, एक समर में आपके 7-8 मिडफील्डर्स में से 6 जा रहे, एंड आई लिटरली मीन इट एज पर द न्यूज, there is obviously Zakaria whom you're not signing, there is obviously Mount looks like it, Kovacic, Kante, Loftus Cheek, and potentially maybe Gallagher as well, अगर basically अच्छा offer आया तो I think we are, मतलब ये कुछ ज्यादा ही हो गया, मतलब it's almost like what PSG tried to do last summer, and कहीं ना कहीं eventually मतलब backfire हो गया, you can argue that, right? And that is something that which is not good in from a footballing sense. Moreover यार, these are people who know Chelsea, but again that relates ना, क्योंकि Kovacic, मैन सिटी लुक्स लाइक, यस अगेन बायर्न म्यूनिख का अगर इंटरेस्ट है तो बेवकूफ क्यों नहीं जा रहा बायर्न म्यूनिख, मुझे पता नहीं, मच एज आई लव कोवाचिच ब्रो, मतलब आई थिंक दैट शुड बी अ नो ब्रेनर, दैट विल बी हेल्पिंग बार्सा एंड चेल्सी, एक्चुअली मैं आता हूं उस पर, लेकिन वही है, वहां पर मैन सिटी जा रहा है, और वहां पर दैट मींस दैट गुंडोगन, बिकॉज कैल्विन फिलिप्स इज फिट अगेन, जनरली स्पीकिंग आई एम गेसिंग दैट गुंडोगन फिनिशिंग हिज कॉन्ट्रैक्ट, तो वो शायद मूव करे, ठीक है, और ही इज फ्री, तो आपको कॉस्ट नहीं करेगा, तो आई थिंक इट्स अ नो ब्रेनर, आई थिंक गुंडोगन, कहीं ना कहीं चेल्सी इज हेल्पिंग बार्सा हियर एज वेल, कि यार कोवाचिच जा रहा है, इसके लिए गुंडोगन कहीं ना कहीं फ्री हो रहा है, और वो ही वांट्स अ गुड क्लब, एंड दैट इज बार्सा ऑफ कोर्स, राइट, जो चैंपियंस लीग भी खेलेगा, तो आई थिंक दैट्स अ नो ब्रेनर, बट ऑन द अदर हैंड मैं जो वापस आ रहा हूँ यार, ब्रूनो गुमारिश का एक नाम दिया देवेश ने, इसलिए मैं हाईलाइट किया हूँ, a scenario where I'll give you example. Forget the cost right now. On paper, in terms of the replacement for Busquets, and we'll come back to Messi. By Bruno Guimaraes, you have Gundogan, ठीक है, obviously Zebay look alike. Then you have pretty much sure यहाँ पे Ruben Neves भी link हुआ था. Zubi Mendy is very strongly linked from quite a few months. हम बात ही कर रहे हैं, as well as a Kimmich, which is a faintly possible scenario, ठीक है, because of the situation at Bayern Munich जो हो रहा है. तो ये 5 है, इनमें से 5 में से who is your best pick in terms of the replacement for Busquets? Very good question, Ankit bhai. Very good options as well. I'll just rephrase the last sentence. बिल्कुल. None of these are replacements for Busquets. The replacement which we need is a DM. The player we need is a DM. So we should be thinking right now. Busquets का सीन था यहाँ से यहाँ तक, ये खत्म हो गया, end over, done. We can't sign all of these players and consider they will be Busquets replacement. We have to go in a different way now. इनमें से कोई भी प्लेयर आएगा, they will not provide what Busquets used to provide. We Of course. have to adapt to the players. These are different players. And मेरे ओपिनियन में यही बात मैं हमेशा कहता हूँ कि you can't get a Busquets replacement if you are not going for a Rodri, क्योंकि Rodri would be the most similar guy to हाँ, Busquets. रॉड्री को तो मैंने डाले नहीं, क्योंकि वो एकदम ही Exactly. अनरियलिस्टिक है. पॉसिबल नहीं है. बट इनमें से जो आपने ऑप्शंस दिया, द गाय दैट आई वांट टू प्ले द डीएम रोल एट बार्सा अलोंग विद फ्रैंकी डी योंग इन दैट डबल पिवट होल्डिंग रोल, जुबिमेंडी. मेरी पिक जुबी मेंडिस जुबिमेंडी जो आई हो, रहेगी. या और एंड एक उसका और क्या नाम है, आई वैल्यू अराउंड थिंक 40-45 मिलियन पड़ेगा यूरोज में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. 60 आई थिंक उसका रिलीज क्लॉज है, एंड विल हाँ, हैव टू साइन हिम थोड़ा सा नेगोशिएट. पीछे, या नेगोशिएट करना होगा. हाँ, तो मेरे ख्याल से अमराबात इज आल्सो एन 45-50 में ऑप्शन. आ जाएगा. I guess so, but Barca has to push for that, right? We still don't हम्म, know if they will be doing that or not. मेरा एक और pick था यहाँ पे, Amrabat था. Why? Because he's a decent pick. He's better than राइट. Ruben Neves to play in that role. वो जो deep lying जो एक disruptive role में है, तो Amrabat मेरा pick इसलिए था because वो सस्ते में आ जाएगा. He'll be like 25-30 and plus he wants to come. So मैं सोचा था कि like 2 साल 3 साल we can go with him, and then जब हमारे financial condition better होंगे तो maybe next year we can go for a better DM. But abhi if it's possible, Zubimendi will be my pick, Ankit bhai.
but you're sure कि आपको एक डीएम मतलब ज्यादा डीएम वाला बंदा चाहिए कि you cannot find a हम्म, replacement for Busquets, because I was नहीं, going to suggest एक और चीज. एक हाँ, होता है कि भाई यू मतलब Zubimendi is a good pick in terms of basically आपका जो age factor है plus the fact that La Liga experience and the way that he plays is, I think Busquets himself has named Zubimendi in the four options that he said. Nico हम्म, is obviously a backup that I हम्म, believe is coming हम्म, back. I'm guessing will come to the keep sell loan as well. But I think एक मैं बोलने वाला था, आई नो कहीं ना कहीं मैं खुश भी नहीं हूँ कोवाचिच के न्यूज के साथ. मतलब आई वाज लाइक एनीवे इफ यू आर planning to change the way that Barca plays in terms of having not having Busquets, so why isn't Barca, if they are thinking about Gundogan, why aren't you going for a Kovacic? Just a question. I think Gundogan वही is more 30 of the million में आएगा profile. वो. Nahin, हाँ, I know. Gundogan is more of the profile that we need. Playing in that interior role, he can also start the play from deep. Kovacic can do that as well, but Gundogan की final thirds में ability है. That is what is needed. I think Gundogan will be playing that interior left interior role जहाँ पे हम गावी को basically खेलते देखते हैं. So इसलिए we have been going for Gundogan because Kovacic wasn't an option उससे पहले तक. And I think between them, I'll always choose Gundogan. So मेरे opinion में that's the right guy we are going for. And मुझे लगता है कि we will be able to sign him क्योंकि अगर कोवाचिक को लाती है सिटी, then there's no point in keeping Gundogan. So I think in और my obviously opinion, the financials yeah, also talk, right, कहीं ना कहीं financial वो will भी है. work well. भाई Free अगेन में पीपल 30 million, no brainer. 30 में. हाँ नहीं मतलब वही है मतलब गुंडोगन ऑन द अदर हैंड विल कम ऑन अ फ्री, और आपका इट्स अबाउट वेजेस मोर राइट नाउ एज थिंग्स स्टैंड. वेयरएज कोवाचिच का मैं अगेन मतलब मैं काफी सरप्राइज हूँ. मैं कल एक वीडियो भी निकालूंगा भाई. मतलब मैं Hmm. थोड़ा सा भाई आई एम अ लिटिल टू व्हाट यू से मतलब अफेक्टेड बाय दैट. तो मैं सोचा नहीं था ऐसा होगा भाई. एक साथ में झटका मिल गया भाई. दोनों तीनों जा रहे हैं भाई. कांटे जो द मिडफील्ड हमारी जो चैंपियंस लीग जिताई थी भाई, एक साथ सब लोग को मतलब इट डजंट मेक सेंस टू मी एट ऑल. बट एनीवे, कांटे का कमिंग बैक श्योर टू है क्या द अंकित भाई? कांटे का जाना कांटे श्योर है का क्या? मतलब द थिंग इज इट्स बीन चेंजिंग यार. मतलब इट्स अ सिमिलर टू क्या बोलते हैं ऑलमोस्ट गुंडोगन केस में बोल रहा हूँ कि यार लग रहा था कि ही एक्सटेंड बट नाउ इज नॉट एक्सटेंडिंग. बट चेल्सी में प्रॉब्लम इज द वेजेस आर टू मच ना फॉर कांटे. तो वो एक प्रॉब्लम हो रहा है कि इफ यू आर नॉट एबल टू सेल इनफ प्लेयर्स वी माइट नॉट एबल टू ऑफर हिम व्हाट ही प्रॉब्ली वांट्स. और प्लस ये बहुत ही इंजरी प्रोन बंदा है. एंड आई नो वो लिंक भी हुआ था बारसा के साथ. आई डोंट term him as a CDM really. He's more like Yeah, a destroyer of a number 8, destroyer. as in हाँ, हाँ. that's what he is actually. So having said that, मतलब again coming back to the Kovacic and Gundogan situation, I agree with you. लेकिन again यहाँ पर I think Messi is good बोल रहे थे about Barca might actually go for a Kimmich in case वो available है. I know it again comes back to the financials जो La Liga allow करे, the overall bracket जो है salary bracket as well as जो कितने funds है आपके पास. बट वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन जी भाई. मतलब अगेन अ गाय लाइक किमिक अगर अवेलेबल हो तो आई वुड हैव टू बी ऑनेस्ट इन योर शूज आई वुड हैव डेफिनेटली टेकन हिम. बट विल इट बी ओवर अ मेसी? प्रॉब्ली नॉट राइट, क्योंकि यू कैन नॉट अफोर्ड बोथ. Offered both who? Kimmich and मेसी Messi. सैलरी एंड किमिक साइनिंग. Yeah, I don't think so. Quebec के लिए अगर हमें 60 million euros लाने पड़ेंगे तो it would be nearly impossible. But then why are we even talking about Zubimendi? Zubimendi कौन सा फ्री में आएगा, right? मतलब लेकिन Zubimendi भी तो किमिक का spend वैल्यू करना बहुत पड़ेगा बहुत हमें. ज्यादा है ना. जुबिमेंटी तो फिर भी आई थिंक 40 मिलियन में आई थिंक यू गाइस Mm, कैन अफोर्ड इट नहीं. I think Real Sociedad will play their strong hand. They have no reason to let Zubimendi go, and So that's one more Zubimendi reason ना. obviously Then that means you need a quality person to replace. DM. अगर जुबिमेंडी Yeah, नहीं है, yeah, yeah. अमराबाद कैन बी अ स्टॉप गैप. लेट्स बी ऑनेस्ट, एज मच Mm, एज वो mm. डीएम है वो लिमिटेड है बंदा थोड़ा, ठीक है. Limited है, तो yes. वहाँ Mm. तो ऑब्वियसली अगर उस सिनेरियो में अमराबाद फॉर से 30 million is available, Hmm, Kovacic hmm, for 30 million is available, Gundogan on free is available, but hmm, you have a Zubimendi जो Real Sociedad मना कर देते हैं, but you hmm, have a Kimmich who's available at say 70 million, just saying hmm, पर नंबर hmm, डाल दिया, ठीक hmm. है. तो इन दैट केस आपको फिर ला लीगा ने मंडे को पता चल गया कि दे हैव एक्चुअली allowed Barca to basically go beyond what is the norm right now. So with that, will it be a question about यार भाई हमारा main position is coming back to it, pivot is the main position, Yeah. we should fix that first and then see if we can afford Messi. Will that be fair on Messi? Again, Messi is a legend. I'm pretty sure he would not want to wait as well very long, right? 15 दिन is Actually, what that he's giving. agreed. मैं समझ रहा हूँ इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम ऐसे सिनेरियो में है जहाँ पे लॉट ऑफ पीपल विल से कि पहले अपनी सबसे इंपॉर्टेंट पिवटल पोजीशन को फिक्स करो, दैट इज द डीएम रोल, एंड देन प्रोबब्ली ट्राई टू गो फॉर लियो मेसी. आई विल से if Leo Messi is available in the market, you have to go for him. No two ways about it. मेरे ओपिनियन में Hmm. you figure out what else you have to do later on, but because it's
Leo Messi we are talking about, not just any player. He's arguably the best player in world football history. If that Hmm. player is on the cards, you have to go for अब him. तो No two आर्ग्यूबल भी ways नहीं हो about it. गया अब आप तो तो मतलब इज yeah, नहीं, for a lot of people that would still be an arguable करेक्ट. point. But मेरे लिए you have to go for him, man. He made your history in the modern history, modern era wale part pe, and he's there, and he has rejected apparently 1.2 billion euros to give you guys the benefit of the doubt for you to sign him. And if you will not show any affection towards him in this scenario, telling him to wait, hoping to sign another player before him, like a Kimmich or a Zubimendi, and say hum dekhte hain, then why did you pursue him beforehand? और ये क्यों दूसरी बार pursue होगा, किया? याद रखिए और ये पिछली दूसरा, बार भी yeah, बंदा वेट किया था yeah, अगस्त तक. आई रिमेम्बर दैट वेरी वेल. this will make things very ugly between Barca and Leo Messi. Things were like या this when बट he ऑफ left. कोर्स. That's the only thing I'm saying. What मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि whatever the financial viability plan of Barca will be, it is just not about Leo Messi. मैं हमेशा यही बात कह रहा हूँ कि people think कि it's only because of Messi. It had to be done like that. There was no other option. अगर हमें कोई भी एक प्लेयर को साइन करना था, we have to get that financial viability plan accepted. And उसका एक part है signature of Leo Messi. That would cost us, I think, जो मेसी की सैलरी होगी somewhat under 20 million euros, 25 हो सकती है, but it will be a bit lesser than 20 million euros. तो cost effectivity है वहां पे, हमें कोई पेमेंट नहीं देनी है, फ्री साइनिंग होगी. So nothing, in my opinion, that's how you have to go. मेसी इज गुड तो बोल रहे भाई, यू कैन अफोर्ड बोथ किमिक एंड मेसी. अगेन मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई थिंक इट कम्स डाउन टू द वेजेस आल्सो व्हाट इज बीइंग ऑफर्ड. Yeah. एज मच एज वी नो अप्रॉक्सिमेट नंबर्स, वी डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर्स. मेसी इज गुड एंड विद किमिक इट्स वेरी अर्ली टॉक. तो भाई मैं कॉन्टेक्स्ट देता हूँ, जो भी लोग हमारा स्ट्रीम नहीं देखो और जी भाई के वीडियोस नहीं देखेंगे लास्ट कपल ऑफ डेज. कॉन्टेक्स्ट ये है कि डेक्लन राइस जो है बेसिकली आर्सेनल बिड करने वाली है, ठीक है. तो वहां पर ये चीज हो रहा है, बट एट द सेम टाइम डेक्लन राइस इज आल्सो वेरी स्ट्रांग इंटरेस्ट फॉर बायर्न म्यूनिख. Bayern. वाई? बिकॉज टूकल का एक बैकग्राउंड है यहाँ पर. टूकल ने एक साल से डेक्लन राइस से बात किया है. रादर टूकल्स कैंप हैज स्पोकन टू डेक्लन राइस कैंप. वहां डेविड मोयस साला अलाउ नहीं किया था बिकॉज ऑफ चेल्सी ऑब्वियसली एंड डेक्लन राइस बीइंग कैप्टन ऑफ वेस्ट हैम. तो ही नेवर केम. तो दैट थिंग इज लाइक चलो अभी मौका है, इन्हीं मूव करने वाले हैं. द मोमेंट द कॉन्फ्रेंस लीग फाइनल गेट्स ओवर, there will be a movement from Arsenal and supposedly even Bayern Munich. There is a high possibility. Conrad Lammer looks brilliant in the last few months, so I think वो तो I think would expect along with Goretzka वो दोनों compete करेंगे. और वहां पर किमिक who's already not happy with things in terms of जो हुआ नागलस्पिन के साथ में, and of course what has happened with Oliver Kahn and Salihamidzic, इसलिए he's like okay चलो, he's not as committed to the cause. जो हमने देखा है बायर्न म्यूनिख में few players have done that, as much as Muller is an exception, right? So Lewandowski is a classical example. So you never know. There is a high chance that there might be a possibility अगर वो tempt करा जाए. That is the whole context. But again, I agree with Z भाई कहीं ना कहीं. I think if Messi is available, आप मना नहीं कर सकते Messi को. That's how it is. अगर आप afford कर सकते हो, that is it. लेकिन timing का चक्कर है Z भाई. That's why it's very interesting, because at the same time जो डेक्लन राइस और आर्सेनल वाला चीज होने वाला है, आई थिंक ऑल दिस थिंग्स हैपनिंग 5 10 15 20 डेज में मैक्स. और ये जो है जून में, द मोमेंट द ट्रांसफर विंडो ओपन्स, आई थिंक इन इंग्लैंड इट ओपन्स ऑन जून 14th. सो विद दैट there has to be a decision around that time, तो वहां पर एक domino effect possible है. But yeah, as in let's see whoever comes in midfield. I'll be taking a few comments. भाई सब लोग again big up यार everyone. भाई सब लोग like कर दीजिए. आप देख ही रहे हो, सब्सक्राइब टारगेट और लाइक टारगेट स्क्रीन पर. अगेन बिग शॉट आउट टू टॉक फुटबॉल ETN, अपने ऑलमाइटी स्पोर्ट्स में भी. इट्स बीन अ क्रेजी सीजन. आई नो लॉट ऑफ टॉक्स पेंडिंग थे जी भाई. आपको पता है भाई आईपीएल खत्म हो गया फाइनली, तो भाई ऑलमाइटी स्पोर्ट्स में थोड़ा सा धीरे चल रहे हैं, लेकिन ऑलमाइटी ब्लूज भाई वी ऑलवेज डू, सो वी आर बैक हियर, राइट? Leo Messi will be the first signing. There's no other way. Chalo, the Barca fans would obviously hope that. Musebe is Messi putting pressure on Barca to sign him first before others like renewals and registrations? I think probably last time जो हुआ था, pretty sure that has to take its effect, right? कहीं ना कहीं. Absolutely. It has to take its effect because they want to avoid जो पिछले बार हुआ था, because Barca they gave their word कि हम तुम्हें साइन करेंगे, but then what happened कि on the last day we found out कि भाई हम उसको साइन नहीं कर सकते, and that wasn't a good scenario. So Messi really wants Barca to speed track things, and he needs a confirmation. पहले साइन करे बाद में साइन करे, he doesn't really care about it. He just needs a confirmation accepted by La Liga, approved by Barcelona, approved by George Messi. He needs that confirmation कि yes, this would be possible. And ये पहले हो बाद में हो, doesn't really matter.
जो भी हमारा वायबिलिटी प्लान है उसमें हमारी सेल इंक्लूडेड है. सो इफ वी विल बी मेकिंग मनी बाय सेलिंग आवर फ्रिंज प्लेयर्स, जिसमें फाटी इंक्लूडेड है, होपफुली फेरन इंक्लूडेड है, फ्रांक केसी इंक्लूडेड है. इसमें देर आर प्लेयर्स दैट आर इंक्लूडेड फॉर द सेल. लोन प्लेयर्स है जिनका हमें सेल यहाँ पे देखना है. डेस्ट है, लॉन्गले है, एंड उमटीटी, मे बी ऑल ऑफ दीज प्लेयर्स है जो क्या सेल भी उसमें इंक्लूडेड है. हमने जो वेज सेव करी है फ्रॉम आर लेजेंड जो कि लीव करें क्लब को, बुस्केट्स हैं एंड ऑल, इनकी भी वेज जो हमने सेव की है वो भी इंक्लूडेड है इसमें. सो द थिंग इज कि होल जो पैकेज है, इट कम्स अराउंड समथिंग दैट बारसा विल बी easily able to make the Messi signing and a DM signing and the other signings they want to require. अब fast track कैसे होगा, how they will approach, it depends on Alimani, it depends on Deco as well who is over there. So यहाँ पे बारसा इंटरनली अपने बोर्ड में इस चीज को डिस्कस करेगी. So that's how it will go. डेको से याद आया, आज वापस से, मतलब नॉट दैट कोई विंडो में नहीं आता है, वापस से शुरू हो गया भाई रफीनिया टू चेल्सी. दैट पॉच इज लुकिंग एट, बिकॉज यस इज द नो ब्रेनर कि इज गोइंग आउट, इज नॉट हैप्पी एट चेल्सी. और ऑलरेडी हम एक्सोडस, मास एक्सोडस प्लान कर रहे हैं. रफीनिया काइंड ऑफ मिसेस द प्रीमियर लीग. मतलब आई नो, मतलब कहीं ना कहीं वो इट माइट बी अ क्लिकबेट, बट मतलब देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर. मैं हमेशा बोलता हूँ, यू नो, देयर इज बेसिकली अ क्लियर थिंग हियर. रफीनिया, आंसू फाटी, as well as Ferran Torres. I think Ferran Torres to Newcastle is very gaining momentum, and Ansu Fati, बहुत ही surprisingly it is Wolves which is making a big bid I believe for Ansu Fati. क्योंकि कहीं ना कहीं it's all about Ansu Fati, someone जो बारसा बहुत believe करते हैं, लेकिन I think कहीं ना कहीं अच्छा ऑफर मिलता है तो they probably will not say no, is what the situation is. And Rafinha, among those three, जी भाई, who do you think is likely to stay and go? Rafinha won't go, अंकित भाई. बंदे के बाल देखे आपने? बंदे ने अपने बाल कलर Correct, करा correct. लिया यार. ही इज नॉट गोइंग. मुझे नहीं लगता कि ही इज गोना गो. बाकी फाटी विल गो, ऑफर आएगा उसके लिए. फेरन प्रोबेबली फेरन कैन गो, बट आई डोंट थिंक सो रफीनिया इज गोना गो. नो, आई अंडरस्टैंड. या भाई पाइमोन, आप स्पैम मत करिए भाई, मैं कर रहा हूँ हाईलाइट, एंड आई एम टेकिंग एज मेनी कमेंट्स एज पॉसिबल. अगेन लिटिल बिट, यू नो, होल्ड ऑन, यू नो, कन्वर्सेशन इज हैपनिंग. मच लव टू यू. इंटर मायामी का ये वाला जो है, मतलब डील, अगेन इसकी भी काफी, मतलब अगेन इट्स अबाउट अल हिलाल और इंटर मियामी, व्हिच इज बेसिकली गिविंग द बेटर डील. दैट इज व्हाट मेसी विल टेक. आई डोंट थिंक इंटर मियामी इज इवन देयर इन द पिक्चर, और हो सकता है बिकॉज ऑफ द लिविंग कंडीशंस. बाय चांस अगर से ला लीगा वाला एक न्यूज झूठ निकला, जस्ट इन केस बैकअप, प्रीटी श्योर यहाँ ही वुड गो विद अल हिलाल ओनली, राइट? इंटर या मियामी है इन द इंटर कन्वर्सेशंस. मियामी, इंटर मियामी थी. इंटर एमएलएस काफी अच्छे से एक्ट कर रही है वहाँ पे. इंटर मियामी इज आल्सो ओवर देयर. बहुत ज्यादा न्यूज नॉइज नहीं वो कर रहे हैं, बट या दे आर देयर. इंटर मियामी का भी एक लिंक है वहाँ पे. लेकिन वही है, ही मतलब मे बी बिकॉज वहां से अगर लोन अलाउ करते हैं, आई डोंट नो हाउ डज इट वर्क फाइनेंशियली. आई थिंक यहाँ, आई थिंक पीपल आर आस्किंग अबाउट फाइनेंशियली. आई डोंट थिंक इट्स एन इश्यू, राइट? अबाउट अगर इफ से एग्जांपल ही गोज टू अ डिफरेंट क्लब व्हिच इज नॉट इन ला लीगा एंड देन इज लोन्ड, हाँ, if part of the wages are taken by that club, then I think it'll work probably वही better वही. for Barca. एक्चुअली मेरा भी ये ओपिनियन था कि भाई अगर इंटर मियामी साइन करती है एंड 2 साल के लिए वो लोन करते हैं, वो पार्ट ऑफ द वेजेस वी शेयर. बट हाउ थिंग्स विल वर्क, लियो मेसी का प्लेयर इज नॉट सो इजी टू मैनेज. यू नो, वो क्वालिटी, इमेज राइट्स क्या है. सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक प्लेयर को साइन करने में होती है उसके इमेज राइट्स. सैलरी Hmm. एंड ऑल उस पर आप नेगोशिएशन करते हो, बोनसेस एंड ऑल उस पर आप नेगोशिएशन करते हो, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन साइनिंग अ टॉप क्लास प्लेयर इज द इमेज राइट. इसके ऊपर काफी सारे ट्रांसफर्स हुए हैं, ब्रेक भी हुए हैं. तो ये प्रॉब्लम है. हाउ दे विल शेयर, हाउ दे विल मैनेज, इसके ऊपर बहुत सर दर्द होगा. आई थिंक दिस वुड बी लाइक अ डिफिकल्ट थिंग टू डू, टू सिट डाउन विद 3-4 पार्टीज नाउ, इंटर मियामी नाउ इंक्लूडेड, टू टॉक एंड डिस्कस ऑल ऑफ दिस. टाइम नहीं है सब चीज के लिए. सो बारसा विल हैव टू फिगर थिंग्स आउट देमसेल्व्स. Hmm. श्रेयस का अच्छा क्वेश्चन है भाई. मतलब इट्स अबाउट, आई थिंक यू आल्सो कवर्ड इन वीडियो इफ आई एम नॉट रॉन्ग रिसेंटली, आई थिंक अबाउट दैट मनी एस्पेक्ट. देखो यार, मेसी, मतलब मेरा ओपिनियन तो यही, क्विकली 2 सेंट्स बोल दे दो श्रेयस. इट्स अबाउट, देखो, मेसी बीइंग मेसी, प्रीटी श्योर देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ फॉर हिम मेकिंग मनी फॉर हिज फैमिली. दैट्स व्हाट मैं देखता हूँ, लेकिन ही वांट्स गारंटी अबाउट एक डिसीजन क्विक. आई थिंक दैट इज द होल पॉइंट. इट्स नॉट अबाउट द कि कितना मिल रहा है. मतलब आई नो इट्स अ ह्यूज डिफरेंस, 1.2 बिलियन इज लाइक, ओ कम ऑन, यू कैन नॉट इग्नोर दैट फॉर श्योर, ठीक है? लेकिन साथ साथ में यहाँ प्रीटी श्योर अगर बारसा अगर ऑफर तैयार कर रही है, इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक एकदम मतलब बेइज्जती वाला ऑफर थोड़ी होगा, राइट? मतलब प्रीटी श्योर वहां, दैट इज व्हाई दे आर गोइंग टू ला लीगा एंड दैट रूट, राइट?
एब्सोल्युटली कंपनसेशन Hmm. लियो मेसी को मिलेगा. इट्स जस्ट दैट कि अभी नहीं मिलेगा. इट्स नॉट हैपनिंग राइट अवे. उसकी जो वेजेस होगी वो डेफिनेटली लिमिटेड होगी. ही विल बी गेटिंग समवॉट अराउंड अंडर 20 मिलियन यूरोस. ठीक है, बट देन वो डिफर्ड वेजेस होंगी, वो बोनसेस होंगे, वो स्पॉन्सरशिप डील्स होंगी जो कि उसके प्रोबब्ली आफ्टर 2 years मिलेंगे. एंड ये एक थोड़ा सा फाइनेंशियल डिलेमा है बारसा को कि भाई मेसी चले भी जाएंगे तभी भी हमें मेसी को पे करते रहना होगा. बट guys, come on, just think about what he is giving up to join you, what he's Hmm. leaving to be at Barca. Obviously he's a footballer यार. उसकी job है football, उसका एक profession है. Money will always be there यार. Money तो भाई big but part है ही football का. But when it Hmm. comes to still playing at the top level, Leo, the thing is कि Leo Messi doesn't want to end your career. And honestly, Ankit bhai, without any disrespect to anyone, going in Saudi, playing over there is finishing your career. खत्म है भाई उसके बाद से. Like who is gonna watch? क्या होगा उसके बाद? Yeah. आप सऊदी जा रहे हो यार. डन नहीं, है. मेरा दैट्स नॉट पॉइंट ऑफ इवन व्यू अ. बहुत स्ट्रांग है जी भाई. देखो मतलब लॉट ऑफ पीपल, क्योंकि मतलब आई एम सेइंग इट बिकॉज़ आई एम अ न्यूट्रल गाइस, जस्ट टू लेट यू ऑल नो भाई, मैं हूँ फुटबॉल फैन ऑब्वियसली एंड टू एंड लाइक जी भाई एंड लॉट ऑफ यू, लेकिन एज टर्म्स इन टर्म्स ऑफ द क्लब आई एम नॉट अ बारसा फैन पर से, नॉट इवन अ रियल मैड्रिड फैन, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ. ठीक है, ये पॉइंट देखिए, विद ऑल डू रिस्पेक्ट टू द गोट्स एंड वी आर टॉकिंग अबाउट मेसी एंड रोनाल्डो. ठीक है, ऑब्वियसली दैट कॉन्वर्सेशन जो हम ऑब्वियसली वी डोंट वांट टू गेट इनटू डिटेल्स, लेकिन मेरा एक पर्सपेक्टिव है. रोनाल्डो obviously is one of the goat for sure. ठीक है, साथ साथ में, लेकिन the fact is the moment he went to Saudi, no disrespect to Saudi, the fact is यार, हम अभी जब एक चैंपियंस लीग मैच चल रहा है और मे बी एक लालिगा मैच चल रहा है या एक प्रीमियर लीग मैच चल रहा है, बाई चांस सऊदी का भी चल रहा है, आई एम प्रीटी श्योर वी विल गो विद द प्रीमियर लीग, लालिगा और सीरिया और चैंपियंस लीग मैच, राइट? दैट इज द सिंपल एब्सोल्युटली. बॉटम लाइन. ठीक है, तो एब्सोल्युटली. ये दैट इज द कंपैरिजन मेकिंग. सो अगर मेसी वहां जा रहा है और इवन से फॉर इंस्टेंस एमएलएस जा रहा है, एंड फॉर पीपल आउट देयर, मैं एक्चुअली देखा हूं एमएलएस एंड एटमॉस्फेयर इज क्रेजी. The fan base is really good. ठीक है, but you cannot compare in terms of the quality of football, the level of football, when you're talking about Europe. I think that's the reality. ठीक है, at least the top five leagues for sure. So I think I agree with you. और कहीं ना कहीं a person who's just won the World Cup and you can argue back to his prime in what 6 months earlier, Yeah. you would not want to go to Saudi or even Inter Miami right now. Ideally Not speaking, right away. Yeah, not correct. right away. That could happen maybe 2 सालों बाद. ठीक है. I हाँ. think Messi wants to still play at the top level, and he is playing at the top level. He still can, and he just wants to test himself out कि भाई क्या वो ultimately कर सकता है. You know what? A lot of players, they do understand themselves कि when their time is up. Hmm. Paul Scholes, Busquets, Iniesta, Xavi, Benzema right now. A lot of players, they do understand कि भाई ठीक है उनका टाइम अप हो चुका है, and हम अब डन है. लेट्स गो, लेट्स एंजॉय, लेट्स अर्न द मनी. मेरे Hmm. ओपिनियन में मेसी का टाइम अभी इज नॉट अप. इट्स स्टिल देयर. इट इज स्टिल लियो मेसीज टाइम राइट नाउ, और मेरे ओपिनियन में ही स्टिल कैन प्रोवाइड अ लॉट टू दिस बार्सिलोना टीम. एंड सेम वेंट विद रोनाल्डो. मैं पता नहीं क्यों मुझे रोनाल्डो से खुन्नस हो चुकी है अभी कुछ दिनों से. as as I heard about the अल नासर वाला जो डील था ना, आई वाज लाइक भाई क्यों यार मैन. मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, hands down, I still believe that guy could play in Europe at least 1 year. मुझे लगता था कि ये भाई नहीं करना चाहिए था, वो डील नहीं लेनी चाहिए थी. आई आई वांटेड टू वो सी टाइमिंग वन की मोर बात ईयर. होगी ना जी भाई, इट्स ऑल अबाउट द टाइमिंग समटाइम्स, मतलब इट आई इज. थिंक बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट ही वाज प्रोबेबली पुट इन अ सिचुएशन, वर्ल्ड कप ईयर भी या. था, प्लस एरिक टेन हाग केम एज अ न्यू मैनेजर, सो ड्यूरिंग दैट टाइम देयर वाज अ विंडो कमिंग इन जनवरी, सो ही या. हैड टू मेक अ कॉल, क्योंकि यार मतलब लेट्स बी रियल, ऐसे कुछ ऑब्वियसली ही इज प्राउड ऑफ बीइंग अ मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर, ही वाज प्राउड, एब्सोल्युटली. ऐसे कुछ इशू नहीं था. तो but at the same time, knowing himself and the leader that he didn't want to stay there and do what, like उसका भी ego as in wouldn't have really made sense. He wanted to play football, और वहां पर the best of the best clubs at that point in time, जनवरी में कितने क्लब्स जाएंगे, मतलब that's the whole point, right? I know Chelsea थोड़ी लिंक हुई थी, but तभी they तो were also not in the right time, right, तभी that तो time. अंकित भाई मैंने कहा था कि दैट इंटरव्यू वाज़न्ट द राइट डिसीजन. व्हाट ही स्पोक वाज राइट, द Agree. टाइमिंग ऑफ द इंटरव्यू वाज नॉट Yeah. राइट. मेरे ओपिनियन में व्हाटएवर हैपेंड, ठीक है, ईटीएच का जो ट्रीटमेंट था वाज़न्ट दैट गुड, बट ईटीएच वाज थिंकिंग अबाउट द टीम. नाउ वी सी देम Mhm. क्वालिफाई फॉर द टॉप 4 आफ्टर सो लॉन्ग. वी नो कि भाई ठीक है भाई ईटीएच ने ये किया, बट लेट मी टेल यू, हैविंग अ क्रिस्टियानो रोनाल्डो इन योर टीम वुड हैव डन ईटीएच अ लॉट बेटर व्हेन द गोल्स वर ड्राइंग अप, व्हेन रैशफोर्ड जस्ट फॉर्म्स slumped, when Rashford wasn't scoring for the past 2 months. तो वहां पे you said ना कि you need another striker. उधर वहां पे when you bring on Bobo, I think strongly believe this Cristiano would have helped this team score a lot more goals. Maybe Sevilla के against वो नहीं हारे होते. Maybe they would have utilized Cristiano's presence. तो कहीं ना कहीं वो जो interview था, it hurt him and hurt Manchester United.
a lot actually. और बंदा अगर रुकता ये साल कंप्लीट करता and if he would have wanted to leave ये विंडो में, then Cristiano would have been available and बाकी क्लब्स then सोच पा रहे होते. So कहीं ना कहीं that's मतलब डेजा वो भी फीलिंग आती है बिकॉज मतलब आई नो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट एकदम, लेकिन मेसी आई नो पुटिंग अप अ सॉरी वीडियो अपॉलजी दैट इज मेसी फॉर यू, बट आई थिंक कहीं ना कहीं इवन मेसी कैंप वुड हैव मेड श्योर कि भाई वो मतलब एक चांस भी नहीं दे वैसी गलती का, कहीं ना कहीं आई थिंक ऑल्दो मेसी वुड हाँ हैव एनीवे बताओ डन इट. मतलब वही बात है अंकित भाई, कितने प्यारे तरीके से मैनेज हुए हैं यहाँ पे. आप देखो लियो मेसी, लाइक करेक्ट. ही हैज ओनली हैड हिज फादर एज हिज एजेंट ऑल हिज लाइफ लॉन्ग, एंड हर एक गलत चीज पे दे हैव एक्टेड. वो जो भी उन्होंने छुट्टी ली, जो कि मेरे ओपिनियन में दैट वाज अगेन राइट डिसीजन, बिकॉज ही ऑलरेडी टॉक टू पीएसजी एंड उसने छुट्टी की बात कर ली थी, बट पीएसजी उस दिन ट्रेनिंग रख दी एंड दे बैंड हिम एंड स्टफ लाइक दैट. मेसी ने सॉरी बोला एंड इवन एक और चीज मुझे बहुत सरप्राइजिंग लगती है, इवन तो दिस गाय इज गोना लीव पीएसजी, लास्ट में इनकी जो न्यू जर्सी आई है उसको भी उसने प्रमोशन पूरा किया है. मतलब दिस गाय इज बिग टाइम प्रोफेशनल यार. यू कांट क्वेश्चन हिज प्रोफेशनलिज्म. मतलब अ गाय हु इज अपैरेंटली लीविंग, ही शुड से नहीं यार मैं क्यों तुम्हारे फोटोशूट में आऊं, नहीं, यू शुड नॉट इंक्लूड मी. इमेज राइट है अगेन, दे विल सेल दैट जर्सी बिकॉज वो मेसी के बॉडी पे है. ही इज वेयरिंग दैट जर्सी, ही इज अ फिगर. उसके फोटोज जाएंगे वहां पे दीवारों पे एंड ही इज लाइक कोई दिक्कत नहीं है बाबा, जर्सी पहन के ही इज प्रमोटिंग द पिक्चर. मैन कम ऑन, देखो दैट्स लियो मेसी एट द क्लास. एंड ऑफ द डे इट्स अबाउट प्लेइंग फुटबॉल. जैसे मुसेब भाई भी यहाँ बोल रहे हो रोनाल्डो, बाय द वे यार मेसी इज गुड, बिग अप यार. मैं सुपर चैट मिस नहीं हुआ, मैं थोड़ा धीरे धीरे ले रहा हूँ, आई एम जस्ट इन द कन्वर्सेशन में स्टार कर रहा हूँ. अगेन आई रिपीट माई सेल्फ गाइज, अगेन बिग अप टू एवरीवन भाई. करीबन 400 लोग देख रहे हैं. आई होप ऑल द 400 पीपल आर सब्सक्राइब टू ऑल द 4 चैनल्स, ऑलमाइटी ब्लूज, टॉप फुटबॉल एचडी, टॉप फुटबॉल ईटी एंड ऑलमाइटी स्पोर्ट्स. भाई सब लिंक है, एज वेल एज हमारे जो ऑलमाइटी गोड्स है भाई मेंबर्स, कपल ऑफ देम आर कंटेंट क्रिएटर्स, सम गुड चैनल्स आई हाईली recommend. They are also tagged below, do check them out as well. Musib bhai bol rahe Ronaldo has to take at least 90% less the money he was getting. There is an ego with top players, still he had 1 year in him. तो मतलब ईगो तो डेफिनेटली है, मतलब आई कहीं ना कहीं अग्री ऑन दैट इज व्हाई दे आर टॉप, दैट इज व्हाई दे आर देयर एट दैट लेवल, ये भी मैं बोलता हूँ. बट एट द सेम टाइम आई थिंक इट्स आल्सो अबाउट टाइमिंग मुसेब भाई. आई डोंट नो, मतलब आई जेन्युइनली बिलीव दैट अगर यही चीज होता ना, मतलब एट दिस टाइम ऑफ द ईयर नो, दैट कुड हैव बीन मैनेज्ड बेटर, बिकॉज विंटर विंडो इज और प्लस वर्ल्ड कप, इट वाज वेरी मतलब बहुत क्लॉग था, तो ही हैड टू मेक डिसीजंस एंड उसका कैंप एंड प्लस दैट थोड़ा सा इमोशनली लिया नहीं क्या, ही रिएक्टेड प्रॉब्ली इमोशनली, व्हाट वुड बी द फेयर वे टू से इट. Could be said that, could be said that way, Ankit bhai. But I think again, Cristiano ka move wasn't about the money thing. मेरे भी opinion में अभी still I'll say this. प्लेइंग I फुटबॉल strongly था. I strongly disagree कि जो दो players है अपनी पूरी जिंदगी फुटबॉल को दे चुके हैं. They have done everything and absolutely everything in the last cell of their body to play football, and they're gonna change their mind about money. मेरे ओपिनियन में एग्जैक्टली. I don't believe that. मैं भी एक फुटबॉलर हूँ यार. If obviously I haven't been up to their standards, चीजें बदल जाती. नहीं, But आई to 100% अग्री believe, यार, मतलब स्पेशली व्हेन, मतलब आई कैन इवन मोर से यार, मैं खेलता हूँ भाई, आई एम एट दैट एज वेयर बेसिकली वी आर टॉकिंग लाइक चलो भाई मौका मिलता चलो खेलते हैं, आई बस रादर वही प्रेफर बात दैट. है. एग्जैक्टली तो मैं भाई इस स्ट्रांगली चीज से डिसएग्री करता हूँ कि पैसा आ रहा है, आते हैं चलो ले लेते हैं. दीज आर कॉम्पिटिटर्स एंड इनके लिए पैसा बनाना कोई बहुत डिफिकल्ट बात नहीं है. वो आज नहीं करेक्ट. 1 बिलियन बना रहा है, वो 10 साल बाद बिलियन बनाएगा. फ्रेंड्स का जो सीजन था वो अभी तक उनको पैसा मिलता है उस फ्रेंड्स की सीरीज बनाने का. मैन कम ऑन, दैट इज लेगेसी, लॉन्जिटिविटी. और ये जो दोनों लोग हैं मेसी एंड रोनाल्डो, रोनाल्डो का वो अनटाइम्ड इंटरव्यू हर्ट डेफिनेटली, एंड देन वो जनवरी में उसको जाना ही जाना पड़ता है, एंड देयर वाज नो अदर टीम हु कुड हैव एक्टेड so soon to sign him because there are a lot of dilemmas, problem है ना भाई. आप एक टॉप प्लेयर को लाते होते, then that was the only option to go to Saudi. And same when Messi के scenario में, when he left, PSG was the only option, so no other team can act that quickly. तो यही चीज है. That is my opinion about this. अब वो अलग बात है कि अभी सऊदी में भाई दे आर लाइक टारगेटिंग लिटरली बुस्केट्स, मेसी, यू हैव ऑफ कोर्स बेंजेमा, उस पर आएंगे थोड़ा बहुत. आई नीड योर ओपिनियन एज वेल एज नॉट जस्ट दैट. मॉडरिच के भी अफवाह आए थे, अफवाह है लेकिन इट्स नॉट ट्रू. एंड एंगोलो कांटे ब्रो, मतलब आप देखो, मतलब दैट इट्स अ प्रॉपर टारगेटिंग चल रहा है और कहीं ना कहीं पैसे हैं उनके पास. अरुण यादव यार, बिग अप आपको यार, थैंक्स फॉर सुपर चैट. किमिक कैंसेलो टू बारसा, हाउ मच पॉसिबल. किमिक के बारे में हम बात कर लिया अरुण, you might want to check out करीबन कितने 20 minutes earlier we have just discussed, you might want to check out later. लेकिन I think Cancelo is a good point. Again हम बात की about that CDM position and Messi we have been discussing. जी भाई, right back, let's be real, जब कुंडे को आप लोग ने लिया था from Chelsea और अदर कुंडे himself wanted to go there at the end,
At that point, pretty sure you didn't expect, Barca not to make, like, apart from, of course, let's be honest, Bellerin is not a long term anyway. ठीक है, तो बारसा आप एक्सपेक्ट करोगे टू एक्चुअली इन आइडियल सिचुएशन साइन अ टॉप क्वालिटी राइट बैक, क्या आप बोल रहे हो? नहीं, अराहो फॉर बिग गेम्स एंड कुंडे फॉर द रेस्ट गेम्स, उससे काम चल रहा है. व्हाई चेंज इट? द बैक इज बीएसी केस परफेक्ट. द थिंग इज अंकित भाई, जो आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा ना कि मेसी की मेक की कोई डीएम, तो आप मैं यहाँ पे ना राइट बैक सिचुएशन इफ अगर नहीं भी डिल्ट होती है, आई वुड बी ओके विद इट, बिकॉज हमने ये सीजन कुंडे को खिला के ना हमने काम चला लिया है. सो अगर कहीं कॉम्प्रोमाइज करने की बात आती है, कहीं कॉम्प्रोमाइज करने की बात आती है, यू वोंट कॉम्प्रोमाइज फॉर अ मेसी, यू वोंट कॉम्प्रोमाइज फॉर अ डीएम, यू कैन कॉम्प्रोमाइज फॉर अ राइट बैक, बिकॉज आपने पिछले साल मैनेज किया है, यू कैन मैनेज दिस ईयर, एंड अगला ट्रांसफर विंडो आएगा, यू कैन गो एंड साइन अ राइट बैक, तो won't be the end of the world. एब्सोल्युटली भाई. यहाँ पर निशांत बुरा, आई थिंक, इज वन एवरीथिंग एट क्लब इंटरनेशनली, ही इज रिटायर्ड. आई थिंक बैगिंग दैट कैश वुड बी परफेक्ट फॉर हिम. मतलब दैट इज द पॉइंट ऑफ व्यू दैट यू हैव, निशांत. बट अगेन, मतलब आई एग्री विद जी भाई, not just because of what we have seen in Ronaldo's case. I think it's about Messi. Really, I genuinely believe कि मैं सोच रहा था say this time last year हमने बात भी की थी. I remember we did a stream about what is the future of Lionel Messi at PSG. Will PSG win? Or then we were hoping कि यार, because it's a World Cup year, was he saving himself for that? And eventually we were proven right कहीं ना कहीं. And I think you cannot say that Lionel Messi has dropped in terms of quality. कहीं ना कहीं it's about PSG. मतलब एक directly सब पूछता हूँ. We were talking about right back यहाँ पर, but what do you think are the main factors why Messi does not want to extend at PSG? There are a lot of factors, right? आपके लिए क्या top 2-3 factors क्या है? Messi at PSG. Yes. Ankit bhai, can you just rephrase the question? मतलब why do you think Messi is not continuing at PSG? Okay, yeah. Project, competition, level, team की chemistry, team का management horrendous है. It's one of the worst run clubs. They just sign players like it is a fucking IPL. Come on, man, ये क्या है? So मेरे opinion में the one thing that will convince Leo Messi, एंड आप लोगों ने एक चीज ध्यान रखी होगी, मेसी ने कभी ना बहुत लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट बारसा साइन नहीं किया था. उसका कॉन्ट्रैक्ट ऐसे 2-2 साल का होता था, बिकॉज यू नो व्हाट, ही वांटेड बारसा टू वर्क फॉर इट. ही वांटेड बारसा टू बी कॉम्पिटिटिव. हर बार हर 2 साल में मेसी का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल हुआ है, एंड ही वांटेड टू सी एंड लुक इफ द प्रोजेक्ट इज अप फॉर इट. प्रोजेक्ट, द कंपटीशन, द क्वालिटी हैज टू बी अप फॉर इट. सो यही मेरे ओपिनियन में लगता है मुझे कि ही फाउंड पीएसजी इज नॉट अप फॉर इट. पीएसजी is not able to play at that level, या फिर उनका management is not as good as what it used to be back at Barca. In terms of sporting wise, so he said bhai theek hai, pull down the curtains. Makes sense. यहाँ पर सनी बोल रहे every stat you hear says in Europe's top 5 leagues because that's what matters. Nothing wrong in going to Saudi, but it's as good as retiring. There's no need to hype this league up, at least not yet. Exactly. That's what we were trying to say from the last 5 minutes, me and Zibai. Again, we're not disrespecting. यहाँ पर कहीं ना कहीं I know एक point of view ये भी है from an Asian point of view or from an Indian point of view also to some extent, क्योंकि I think AFC maybe you're expecting कहीं ना कहीं maybe we can expect एक development for Indian football of players like these come to Asia. मतलब I understand वो aspect, लेकिन I think वो उसके लिए it's still early. Even if Lionel Messi comes, again no disrespect to our own leagues, लेकिन कहीं ना कहीं even if he comes say at 37, I would still say he would be good enough to help out the players in Asia. Simple as that. I don't think it's too late. As simple as that. तो वो meanwhile you can go for other players who probably are at that juncture. मतलब for example हमारे चेल्सी में 30,000 players है भाई. बहुत सारे. I know हम थोड़ा रेडवुड भी है, हम I know बेच सकते हैं absolutely. Whatever happened, Ronaldo will remain a Ronnie forever. Absolutely, Devesh, being a Manchester fan, I can totally understand and relate to you. वहाँ पर I would like Messi to go to Man City. बर्नार्डो एंड गुंडोगन. एक्चुअली इसके बारे में बात करनी है, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है आपने किया. थोड़ा मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ जी भाई. तो ऑब्वियसली जावी एंड पेप, लाइक लेट्स बी रियल, मतलब जावी पेप में कोई इश्यू तो नहीं हो सकता. दैट इज नो टू वेज अबाउट. कहीं ना कहीं वही है, क्लिक बेट हो सकता है, सम रिपोर्ट्स हैव कम. लेकिन जो कैंसेलो के केस में हुआ था इन जनवरी, एंड यहाँ पर बिग अप टू सुपर चैट जो हमें मिला था भाई, उन्होंने भी क्वेश्चन किया था अबाउट कैंसेलो. मतलब द फैक्ट इज Barcelona did not get Cancelo on loan and Bayern Munich got him. Pretty sure वहां पर Barcelona were interested, but यहाँ पर there is some miscommunication it seems between Barca के camp and Man City के camp, or maybe Pep's camp or Xavi's camp, that in the end Pep ने veto किया for him not to go to Barcelona, which is I cannot believe it, to be honest, क्योंकि वो board में है भाई, if I'm not wrong. He is a shareholder, right? If I'm not wrong, Barcelona में. तो
मतलब what is your thinking there, or because of that Gundogan transfer will it get affected as well? पेप ने हेल्प किया था हमें विद द फेरेन टोरेस साइनिंग एंड But that was the previous year, right? या या Last year कैंसलो की जहाँ तक January. बात थी लोन पे आना, इफ पेप हैड टू प्ले अ पार्ट की अगर पेप इसका पार्ट प्ले किया था सो दैट कैंसेलो couldn't sign for Barca man, then I don't understand, but Pep loves मतलब Barcelona. लॉजिक क्या होगा? लेट्स हाइपोथेटिकली थिंक कि पेप ने ठीक किया होगा, है लॉजिक क्या होगा? मतलब मुझे तो कोई लॉजिक ही नहीं नजर आ रहा, मतलब समटाइम्स सम लॉजिक आर्टिकल्स कम लाइक दैट, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, मतलब व्हाई वुड कंपटीशन डायरेक्टली था ना, नहीं था ना बारसा इस नहीं सीजन था तो। बारसा इंटरेस्टेड थी, बारसा weren't going for him. मैं सरप्राइज हूँ इस हम्म, चीज से कि when people are saying कि पेप ब्लॉक्ड कैंसेलो टू बारसा, भाई बारसा ऑफर नहीं कर रही थी उसको, कहाँ से करते, सैलरी कैसे मैनेज करते, हराम को, और अपने प्लेयर को तुम रजिस्टर नहीं कर पा रहे हो, बारसा अपने प्लेयर्स को रजिस्टर नहीं कर पा रही थी, गावी हम्म, गावी 6 पहन के 30 पे वापस आ गए, हाउ वी वुड हम्म। हैव loaned in Cancelo, and why would Pep stop that? मैं बिलीव नहीं It करूंगा इस doesn't पे make जब तक sense. मैं doesn't make sense, जब देखो, तक मैं मुझे अगेन ऑफिशियल पीपल, आई एम नॉट अ सुनूंगा नहीं. बारसा फैन, मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ, हम्म. मैं खुद बोल रहा हूँ कि यार डेफिनेटली मैं बोलता हूँ, आई थिंक दैट इज अ क्लिक बेट, बट एट द सेम टाइम अभी जो सिचुएशन है, लाइक यू सेड, जैसे मुसे भाई भी यहाँ पर बोल रहे हैं बारसा शुड सॉर्ट राइट बैक इन जनवरी, फिक्स डीएम रिन्यूअल्स एंड मेसी इन दैट ऑर्डर. आई एग्री विद दिस, इफ आई वुड हैव बीन अ बारसा फैन एज वेल, 100% अग्री. लेकिन अगेन मतलब लेट्स अस्यूम कि यार फाइनेंशियल्स आपको अप्रूवल्स मिल गए, तब तब तो देन आइडियली मतलब इट्स बेटर टू फिक्स दैट थिंग इन नाउ रादर देन जनवरी, बिकॉज वी ऑल नो क्या होता है फुटबॉल में, प्लेइंग फुटबॉल. तो which is the right back option? मतलब Pavard is again एक option. Would you go, say for example, एक Gundogan is coming on a free, can become a number 6, and you go for Pavard क्योंकि वो हो सकता है 25 million, because he's not happy with the number of right backs there, और plus वो center back भी खेलना चाहता है, तो बारसा में वो भी rotation का option है with a Kunde, Araujo and Pavard. और would you say कि नहीं, again go for a proper, a good top right back, a Foyth for example, जो आप चेज ही कर रहे हो बहुत दिनों से. अंकित भाई, आई थिंक इस पॉइंट टाइम पे ना हमें यहाँ पे वाइस साइनिंग करनी पड़ेगा. आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे गोइंग फॉर अ टॉप राइट बैक विल मेक आवर टीम वेरी वेरी टॉप. मुझे ऐसा फील होता है कि यू हैव टू गो फॉर द सेंसिबल साइनिंग. अर्नाउ मार्टिनेज इज वन ऑफ द गाय जो कि मुझे Correct. काफी अच्छा लगता है. ही कुड नॉट बी हायर देन 20 million euros, तो एक अच्छा पोटेंशियल है, एंड we can sign him, we can use him, or if that doesn't work out, we can loan him or sell him later on. But if you invest 30-40 million euros in Pavard or a Frimpong, I mean, like, मैं wait नहीं कर रहा हूँ कि Frimpong fail हो. I think he could do a great job. He's a तगड़ा तगड़ा फुल बैक है यार वो बंदा. एंड वैंडरसन से भी हम लिंक हुए थे. वी वर लिंक विद अ Hmm. लॉट ऑफ प्लेयर्स. मुन्नेर से भी हम लिंक्ड हुए थे. मेरी फट गई थी सुन के जब मैं थॉमस मुन्नेर से हमारा लिंक आया था. बट वी नीड वन राइट बैक, दैट इज वेरी ट्रू. एक बात तो है, कुंडे नहीं capable to play at that right back position. So I hope कि Barca will address this if in this window. होता है बहुत अच्छी बात, नहीं तो फिर next January window और next summer. I really hope we sort this out यार. और डालो नहीं आ रहा भाई, नहीं को डालो इज गॉन डालो नहीं. बिकॉज आई थिंक इज एक्सटेंडिंग विद मैनचेस्टर यूनाइटेड, तो डियोगो डालो इज नॉट एन ऑप्शन इन एनी मोर, एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि एज इट इज भाई हम बात करें पैसों की, और वी ऑल नो द सिचुएशन. भाई रानोजय क्या हाल है भाई, नाइस टू सी यू. गुंडोगन एंड जावी टुडे ऑन लाइव. मुझसे भाई ओपी ब्रो. हमें अगेन भाई शाउट आउट आपको, हमने इसके बारे में बात किया है. अगेन वी डोंट हैव द डिटेल्स एज येट, बट इट इज वर्क इन प्रोग्रेस, इट विल टेक टाइम. तो आप वापस से चेकआउट कर सकते हो. वी डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग्स यार. भाई काफी लोग यहाँ पर ला लीगा फैंस और आल्सो लॉट ऑफ रियल मैड्रिड फैंस आल्सो आई कैन सी इन द चैट, और थोड़ा बहुत शिफ्ट करते फोकस एंड कम बैक टू बारसा. अगर जी भाई, आई होप यू हैव अ फ्यू मोर मिनट्स. Yeah, ठीक है, definitely. तो भाई अगेन हमने कल भी बात की थी विद अ कपल ऑफ रियल मैड्रिड फैंस. द बेंजेमा वाला सच में बॉम्ब जैसा है, मतलब आई डिड नॉट एक्सपेक्ट इट, क्योंकि द वे दैट रियल मैड्रिड है भाई, बार्सिलोना फर्स्ट ऑफ ऑल हैव वन द लीग, ठीक है. रियल मैड्रिड फर्स्ट इज लाइक कीप द थिंग्स दैट इज गोइंग वेल फॉर यू एंड देन बिल्ड ऑन दैट, एंड देन द बेंजेमा बॉम्ब कम्स. मतलब I understand totally the financial aspect of things, लेकिन बेंजेमा कैप्टन ऑफ रियल मैड्रिड, इफ ही इज टेम्प्टेड, मतलब अभी अभी लग रहा है अनलाइक मेसी, हो सकता है he might actually move. So what are your opinions and how do you think they can replace को? मतलब काफी लिंक हुए. Kane, you think he's the right fit? Kane is the right fit. Yes, Kane is the right fit. Mm-hmm. मैं सरप्राइज्ड हूँ अबाउट दिस बेंजेमा न्यूज़. मतलब शॉक था मैं भी कि बेंजेमा लाइक वांट्स टू लीव. प्रॉब्लम ये है कि मड्रिड
how they failed to assess this situation, उन्होंने शायद taken for granted ले लिया क्योंकि बेंजेमा से वो verbal agreement last year ले चुके थे, and they kind of accepted कि बेंजेमा will finish, but यार चीजें एक साल में चीजें बदलती हैं। Hmm. तो एक साल में वो whatever happened, he missed out on the Champions League, he missed out on La Liga, and फिर I think बंदे ने सब कुछ कर लिया है for Real Madrid. He has won a lot of titles here, 5 Champions League जीती है, has won everything, Ballon d'Or जीता है। The I think this leadership point of aspect time of पे things, ना, because आपका Modric and Cruz also साथ में आपके potentially, like, within a span of few months, all the three are gone. खत्म। Just imagine. हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना कि हाउ डिड रियल मैड्रिड मिस्ड आउट ऑन दिस, दे शुड हैव, हम ये सीजन के स्टार्ट होने से पहले भी ये चीज कह रहे थे। आई मेड अ वीडियो अबाउट रियल मैड्रिड स्क्वाड, मैं हर साल करता हूँ, तो आई टॉक्ड अबाउट दिस कि यार मैड्रिड को ना, दे हैव टू साइन अ करीम बेंजेमा रिप्लेसमेंट, like they have always done, एक बैकअप स्ट्राइकर उनके पास हमेशा होता है। वी हैव सीन अडेबायोर कमिंग इन, हम काफी सारे फुटबॉलर्स को देखे यहाँ पे एज अ हाँ, बैकअप टू द स्ट्राइकर्स कमिंग इन ऑन लोन इवन। right. इस पॉइंट ऑफ टाइम पे they didn't just need a backup, they needed a young prodigy who could take the job when Benzema leaves, and he could have left next year जब उसका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होता, बट अभी हाँ. आई थिंक ही फील्स And कि भाई उसको एक next year, ऑफर है, Endrick अच्छा भी will ऑफर be है। in the team. Yeah, वो भी next है. year Endrick आएगा, but you can't, you will not be starting with an 18-year-old in your Of strike course. position. Hmm. So मैं कहीं ना कहीं surprised हूँ, but I understand, I agree with Benzema leaving this point of time. मैं agree Hmm. करता हूँ, because if you think about Benzema's role at Real Madrid, he has done everything. He can up and leave, nothing, no problem. But Real Madrid on the other hand, they kind of took Karim Benzema for granted कि ये बंदा रुक रहा है, and मैं यहाँ पे surprised हूँ। Perez, man, Perez has always done great business in football, and abhi he Correct. kind of went very slow, lazy in terms of transfers. कार्लो एंचेलोटी कहते रहे कि भाई he needs the signings, he needs those players. फुल बैक के लिए कार्लो एंचेलोटी रो रहे थे, स्ट्राइकर के लिए ही सेइंग कि भाई मुझे केन या ओसिमन जैसा प्लेयर चाहिए, एंड नाउ अब जब एकदम एंड मोमेंट आ चुका है यहाँ पे, स्टिल 2 महीने बचे हैं लीग स्टार्ट होने में, स्टिल पेरेस कैन गो ऑन एंड साइन अ स्ट्राइकर, बट देन आई वाज सरप्राइज कि दे डिडंट मेक any adjustments towards it. Could be कि भाई वो बेंजेमा के लिए रिस्पेक्टफुल रहना चाह रहे हैं क्योंकि बेंजेमा स्टिल हमारी टीम में है, तो you won't sign any striker, you are respectful towards him, you still feel he is the guy to go to, and in my opinion he could still have been, एक साल और आराम से बेंजेमा could have played, but yes, we did see कि थोड़े से patch of एक decline बेंजेमा के आया था post वर्ल्ड कप, and कहीं ना हाँ, कहीं they मतलब थोड़ा need एक इंजरीज भी, आई इंजरी भी थिंक, थी। 2-3 इंजरीज, आई थिंक, द लास्ट फ्यू मंथ्स, वो भी एक या चीज है। तो आप कैश इन, मतलब, लेकिन वही, आपको कुछ मिल भी नहीं रहा है फिर रियल मैड्रिड, नहीं मिल रहा है, नहीं आपने मिल रहा साइन है। नहीं किया यार, मतलब दैट्स द सैडेस्ट पार्ट, जो हम एक्चुअली, भाई, हम चेल्सी फैंस बात करेंगे कल भाई डिटेल में, हम मिडफील्डर्स के साथ हम डील कर रहे हैं, सम एक्सपीरियंस मिडफील्डर्स इन दैट सिमिलर थिंग। मेसी इज गुड, या आई रेड योर कमेंट ब्रो, आगे आई थिंक कल भी हमने बात की थी, मेसी इज गुड, आपका कमेंट लिया था ना कहीं आई थिंक it came as a shock, and kahin na kahin Zebhai is right that probably they should have planned for their existing holes, which they probably took a bit too much time, और अभी they got a shock, so I'm like, okay man, अब कहाँ पर focus करें almost, so now they might have to panic and go into the transfer market, Yeah. और मतलब again Kane, Daniel Levy, I know Spurs say Modric is a great example himself coming England से आए, Michael Owen has previously come from England of course, and in my opinion arguable था, लेकिन in my opinion he did pretty well as a super sub. Again, Van Nistelrooy in the past has gone, Robin has Mm, gone, मतलब काफी mm. हुए हैं signings यहाँ इंग्लैंड से, but what do you think? A Firmino, मतलब would you, क्योंकि Benzema is a experienced guy, Firmino with two Brazilians playing Rodrigo, मैंने एक बात बोली थी, it's a final year for Ancelotti is one, and Ancelotti has gone a 4-4-2 diamond previously. Could you see Firmino coming in as a Joselu with a backup, with maybe Rodrigo and Vinicius getting free roles, or Firmino playing what he used to play in Germany, or maybe when he was in prime Liverpool? The top of a diamond, हाँ, the top of a correct. diamond, and 4-4-2. Very interesting. But the thing is, I don't doubt Firmino to play that role. No, बिल्कुल भी नहीं. He owns that role. The thing is, I doubt the availability of Firmino. मैं बस ये लेकिन डाउट स्टार्ट करता हूँ कि करेगा ना, अगर कोई टॉप स्ट्राइकर नहीं आएगा तो he'll start. definitely he'll start. That's what I'm saying, Ankit bhai. कि how many games will be able to actually play? How many games will In actually he be terms able of to अच्छा start in terms of फिटनेस availability? एंड फिटनेस, हाँ फॉर्म. इंजरी फ्री रहना, बात ही है। फर्मिनो अगर कहते हैं कि भाई मैं फिट हूँ, मुझे कोई भाई किसी मैजिकल तरीके से फर्मिनो अभी इंजर्ड नहीं होंगे, आई विल हैव इन माय टीम सबसे पहले
मैं रख नहीं, लूंगा लेकिन आई वुड बाइट योर हैंड ऑफ यार। मैं उस दिन बात ही कर रहा था भाई लिवरपूल फैन से, मैं बोला भाई फर्मिनो दे दो, बोला चांस ही नहीं है कि वो इंग्लैंड में रहेगा। अनलाइक या व्हाट चेल्सी एंड आर्सेनल आर डूइंग दिस डेज अबाउट शिफ्टिंग, एंड मैन सिटी एज वेल टू सम एक्सटेंट, लिवरपूल करती नहीं है, वी ऑल नो दैट, दैट्स नहीं आल्सो प्रॉब्लम विद लिवरपूल कहीं ना कहीं। बट आई थिंक इंटर मिलान स्ट्रांगली लिंक्ड है, लेकिन अगेन इंटर मिलान अगर लूला पार्टनरशिप ब्रेक होता है, अगेन डोमिनो यार बहुत अच्छा होने वाला है बहुत ट्रांसफर हाँ मार्केट, डोमिनो इफेक्ट। अगर आपका लुकाकू, और मैं हाथ जोड़ता हूँ वापस लाओ मत यार उसको, टेक एन एल एंड जस्ट सेल हिम फॉर व्हाटएवर इंटर इज गिविंग यू, आई वुड से। लेकिन अगर बाय चांस वो लुकाकू वापस आता है, देन आई एग्री दैट ही विल probably go to Inter Milan, because him playing with a Lautaro who's your main man actually in terms of हम्म basically जिस पर हम्म responsibility makes more sense compared to यहाँ पर where he'll become the main man, as much as Firmino 2 साल पहले was that, I don't think right now he is. नहीं नहीं सही बात That है was a fact. तो I agree, लेकिन again मतलब would you say कि make Rodrigo that man यार? Rodrigo can become your main goal scorer and आई Firmino actually plays a supporting role. एब्सोल्युटली आई टॉक्ड अबाउट दिस मैंने कल एक वीडियो बनाया था अबाउट रियल मैड्रिड स्क्वाड एंड उसमें मैंने थोड़े से टैक्टिकल पर्सपेक्टिव डिस्कस किए थे हाउ कैन दे लाइन Hmm. अप इन स्टाफ तो उसमें दैट इज व्हाट आई सेड कि रॉड्रिगो इन द सेंट्रल स्ट्राइक रोल विद फेडी वाल्वर्डे ओवर ऑन द राइट एंड दे हैव Jude Bellingham in the midfield along with Modric, Cruz and Modric Cruz yeah so I thought कि भाई this would make sense because Rodrigo has showed कि वो बंदा गोल स्कोर कर सकता है but कहीं ना कहीं Madrid lifelong they have always played with a striker Hmm. अंकित भाई वो they have always had Yeah, terrific even a terrific strikers Huntelaar Di for Stefano example हो मुझे याद है भाई, मतलब Klaas and हमेशा। Hultelar yeah Yeah. yeah आप देखोगे Chicharito was also there for a time being but that was also Orientus in the back loan था days, yeah बिल्कुल। तो आई थिंक इस पॉइंट टाइम पे दे विल नीड they will need a striker. They have to go with a striker. There are options. Vlahovic, Lautaro Martinez would kill at Real Madrid if he comes in. Osimhen would be far. Harry Kane is the guy जो कि मुझे लगता है would be perfect. And man, imagine Harry Kane. बहुत सारा difference नहीं होगा. White jersey यहाँ पे भी पहनते हैं, white jersey वहाँ पे भी पहनेंगे. But he will still continue to score on those goals, man. It would be incredible. मतलब wow. But यहीं पे Madrid को problem आती है. They have to spend 100 million euros for Jude. हम्म। Plus add-ons, and now they'll again have to spend a good buck, good bucks to sign a striker. अगर Benzema रुकते तो they would not have signed another striker. They would have signed a backup, Joselu or someone like that, and that would करेक्ट। have been just that. फेयर एनफ। अच्छा भाई, भाई मैं देख रहा हूँ भाई चैट में बहुत ही मस्ती हो रही है, मतलब नॉट इन नाइस वे, तो भाई मस्ती करिए आप, मस्ती मतलब देयर इज अ थिन लाइन भाई, हर एक स्ट्रीम में बोलने की जरूरत नहीं पड़ती यार। गाइज वी आर मैच्योर इनफ, व्हेन आई से ऑलमाइटी फैम राइट, दैट मींस आई ट्रस्ट यू गाइज राइट, तो कैन आई ट्रस्ट यू गाइज भाई, लेट्स एक्ट मैच्योर। अगर कोई बैंटर कर रहा है तो भाई दूसरा बंदा इग्नोर करे, और बैंटर कर रहा है तो भाई डू नॉट क्रॉस द लाइन, डू नॉट गो बिलो द बेल्ट, सिंपल एज दैट। और क्या कर रहा है एग्जैक्टली मैं कमेंट मिस कर दिया, लेकिन मुझे दिख रहा है कुछ कुछ तो लड़ाई चल रही है, तो मॉड स्टेप इन एंड गिव देम अ वार्निंग एज वेल, लेट मी नो इफ दे आर क्रॉसिंग द लाइन फॉर श्योर। लेकिन बिग अप एवरीवन भाई, सब लोग अगेन बिग शाउट आउट टू जी भाई एज वेल एज हिज चैनल्स, एंड ऑफ कोर्स होपफुली यू गाइस सब्सक्राइब टू आवर चैनल्स एज वेल एज हिज। लेकिन कमिंग टू बारसा बैक, थोड़ा बहुत Carrasco, मतलब अगेन दैट्स अ लो लाइंग थिंग, मतलब यू थिंक Carrasco इज कितने कितने में आएगा Carrasco इफ आएगा, आई थिंक 20 around. तो दैट इज नो ब्रेनर राइट, इफ यू आर लूजिंग अ फाटी एंड Torres फॉर एग्जांपल। आप डे यार अंकित भाई, आप डे अच्छा रखना है अच्छा। यार, मतलब स्टार प्लेयर है यार अपना, और उसको रखने का कोई खर्चा नहीं है, उसके कोई ऐसी खासा वेजेस नहीं है। बट बात ये है कि उसको सेल करके ज्यादा हमें मिलेगा ना, वी आर काइंड ऑफ फिगरिंग कि 35-40 तक इवन जा सकती है उसकी सेल। बट मैं ये सोच रहा हूँ भाई, कौन 40 मिलियन यूरोस खरीदेगा भाई आपडे को? लालिगा की कौन टीम है जो 40 मिलियन यूरो एक प्लेयर खरीदेगी यार? मैं तो मेरा खत्म हो चुका है ये बिलीव ऑन दीज लालिगा टीम्स की ये दिल मेक सम 50-40 मिलियन यूरो साइनिंग। कहाँ से ये ऐसे टूटे फूटे प्लेयर ले आते हैं बस? 40 मिलियन यूरोस कौन दे रहा भाई है? टूटे फूटे से याद है, आप बहुत देर से आई थिंक चल रहा है मलिक छेत्री, आपने मैसेज किया लेफ्ट बैक कौन है भाई, अपना लेजेंड मार्कोस अलोंसो को कैसे भूल सकते हो? इज अ भाई कम एज अ ऑन मैन। बैकअप लेफ्ट बैक, आई नो ही इज नॉट समवन इन अ चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल आप एक्सपेक्ट करोगे, बट ट्रस्ट मी मलिक छेत्री, मार्क माय वर्ड्स, इन अ चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल बाय चांस अगर विदाउट ड्यू रिस्पेक्ट अगर बाल्डी इंजर्ड है, Alonso will not let you down. I'm telling you directly. मतलब यहाँ पर you are hearing it from me, and I think Z भाई के साथ हमने tactically discuss किया. I think three हाँ the back in game हो जाती है, in a strange way that helps यार. That helps. तो वो it's not too bad with Christensen kind of can drift towards the left hand side, जो लेफ्ट हैंड साइड बहुत अच्छा किया यार वो last बहुत season में. Come नेचुरल on.
वो बहुत नेचुरल रोल आती है अलोंसो की. आई वांट टू सी हिम प्ले एट दैट रोल. रादर देन सेंटर बैक आई थिंक लेफ्ट विंगिश जो होता है ना, आई डोंट माइंड हिम. मतलब ये सेंटर बैक ह्यूज इश्यूज है, मैं तो डायरेक्टली बोलता हूँ. आई नो जी भाई हैज अ डिफरेंट लेवल ऑफ भाई रैंट वहां पर मैंने सुना था भाई, लेकिन यहाँ कुणाल बिग अप यार. अरे वी आर 9K bro, क्या बात है. thanks man Abhishek, big up to everyone again. Hopefully bhai everyone, let's get talk about ET to 10K as well as us very soon as well. Yes, updates, I think the popular opinion looks like it. So I think looks like it Carrasco is Yeah. almost a backup. एक बंदा भाई before we end, couple of more names तो करना ही है भाई. नहीं ओबामयांग नहीं बहुत स्प्रिंट करता है भाई अंकित भाई, ओबामयांग. ठीक है उबांग, ठीक है. मुझे मेरे पता नहीं, मेरे दिमाग में वो कमेंट तब से घूम रहा है. द हाँ लास्ट मुझे अमेरिकन गाय टू डिस्ट्रॉय सच मास डिस्ट्रक्शन वाज. मुसेफ भाई ने बोला था ना मुसेफ भाई मार्कस भाई, आई एम टेलिंग यू दिस गाय इज. आई आई हैवंट लेट दैट आउट ऑफ माय सिस्टम अभी तक. मैं बता रहा हूँ, मैं जब भी ऐसे चुपचाप बैठ रहा हूँ मुझे वही कमेंट याद आ रहा है. बिल्कुल I'm so बिल्कुल. sorry नहीं यार. नहीं बिग अप यार, बिग अप टू चलो. द चैट, आपके या चैट ओके 100%. लेकिन कमिंग टू ओबामयांग यार, देखो या मतलब हम वी हैव डिस्कस्ड अबाउट हिम एज वेल. कहीं ना कहीं आई थिंक हिज मार्केट वैल्यू हैज गॉन डाउन एंड डाउन थैंक्स टू चेल्सी एंड दैट हेल्प्स बारसा. Was in the squad named, I think if I'm not wrong, technically registered in the last season as well. तो आई थिंक उसको मेडल मिला है कि नहीं, प्रॉब्ली मिला होगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम नॉट श्योर. मेडल एनीवे मिला है. मिलेगा अच्छा मिलेगा. इधर उसको रजिस्टर रखा था हमने, आई थिंक. हाँ, और सेलिब्रेट भी ही कर बी. रहा. और लेट्स बी या ऑनेस्ट, हिज वो तन मन सबसे बारसा का प्लेयर समझ रहा है अपने आप को. एंड या अगेन या नथिंग अगेंस्ट बारसा बट डेफिनेटली अगेंस्ट टीम मैं बोलता हूँ. वहीं पर मैं क्वेश्चन करूंगा. नाउ दिस इज अ गाय हु स्कोर्स गोल्स फॉर फन फॉर बारसा, हु स्कोर्ड गोल्स फॉर फन फॉर आर्सेनल. लेकिन अब लास्ट 3 क्लब में, लास्ट 3 स्टिंट्स में, 2 स्टिंट्स में ही हैड अ इश्यू. पहले पॉटर के अंडर लगा था दैट पॉटर इज रॉन्ग एंड अबाउट नॉट पिकिंग हिम, बट even under Lampard it was quite clear things. So I would now say the other way around, that there is for sure an attitude issue, isn't it? So is it there not a is, there dangerous is. sign for a youngish Xavi side? Uh, there's no problem for Javi side because Aubameyang is not gonna be at Barca. I don't see Definitely him at not. Barca. Definitely तो not. भाई ले रहा कौन है ओबामेयांग को? हम लोग कॉन्ट्रैक्ट हम नहीं ले फाड़ के रहे. फेंक रहे हैं क्या आप लोग? बारसा कहाँ ले रही है? फेंक दो आप उसके साथ जो करना है करो. थैंक यू सो मच Aubameyang. You were a player. आपने डिलीवर किया. You got the wage for it and that's done. हो गया. आई यही थॉट तक इट था वाज अ जो नो था. ब्रेनर, इसलिए मैंने तो बात ही नहीं किया कि ओबामेयांग तो पक्का जाने वाला है बारसा. यार मैं नहीं चेल्सी फैंस देखना. तो यही सोच रहे हैं. अच्छा नहीं 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 अंकित भाई, हम नहीं सोच रहे हैं. ये कैसी बात हो गई भाई? Aubameyang क्यों वापस लेंगे हम? नहीं सर, आप रखो. भाई ओबामेयांग इज अ गाय हु इज अवेलेबल ब्रो. आई थिंक 10 मिलियन है खाली, बाय द वे उसका वैल्यू अरे नहीं 20 से नहीं 10 गिर गया है नहीं. थैंक्स टू आप चेल्सी. आप रखो. भाई बारसा फैंस did not like this Mazen big up, लेकिन I don't think they like this as well, नहीं? नहीं Pretty मुझे sure. लगता ना. हाँ, नहीं नहीं, तो टू बी ऑनेस्ट यार, बेइज्जती की बात नहीं है. भाई बढ़िया स्ट्राइकर है, लेकिन कहीं ना कहीं Yeah. आई थिंक ही हैज clearly shown to the world that there is an issue there. That for sure there is an issue. I don't think The, मतलब चेल्सी भी राइट नहीं थी. I'm sure the about the it. reason Ankit bhai I don't want Aubameyang is not his attitude or something. हमारे लिए he has done a great job. I'm thankful, but मैं उसका पिछवाड़ा चाटने नहीं मार वाला हूँ for what he has done for us. He had a job to do. एक स्ट्राइकर से मैं गोल्स नहीं निकलवाऊंगा तो फिर मैं क्या निकलवा रहा हूँ भाई? He did the job यार. तो इसके लिए पता नहीं लोग पीपल इतना क्रेजी क्यों हो जाते हैं यार कि Aubameyang ने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर लो भाई. अरे मुझे He बहुत had a हेट मिला job था to एक do. गेम में ना, वो भागा नहीं था, याद है मैन सिटी के गेम में? ही वाज नॉट इवन रनिंग एंड आई गेव हिम Uh, हेट. ब्रो कम ऑन मैन, द गाय इज एक्टिंग लाइक अ फ्रॉड एज मच एज आई. मैं खुद प्रेज किया था जब yeah. साइन किए थे. आई गॉट अ लॉट ऑफ हेट एंड मोस्ट ऑफ देम ऑब्वियसली वो बारसा फैंस, राइट? एंड मे बी सम आर्सेनल फैंस, आई डोंट नो. लेकिन वो हो जाता है ना समटाइम्स, जब सम यू आर अटैच्ड टू सम प्लेयर्स. जैसे कोई प्लेयर्स होते हैं लाइक फॉर एग्जांपल इवन ऑन लोन यू गेट अटैच्ड टू सम प्लेयर्स क्योंकि दोस प्लेयर्स इन दैट शॉर्ट ड्यूरेशन डू वेल फॉर यू. तो आई थिंक इट कुड हैव बीन वन ऑफ दोस थिंग्स. सो आई मे भी हो अंडरस्टैंड द. सकता है. टैक्टिकली नहीं फिट होता है यार वो. आई नो एंड द पीपल हु फॉलो बारसा नो क्लोजली, जो लोग फुटबॉल जानते हैं एक्चुअली में, कि उबमा के बारसा में होने से बारसा को कितना चेंज करना पड़ा अपनी फिलोसफी. मैन, वी वेंट फ्रॉम प्लेइंग आवर ब्रांड ऑफ फुटबॉल. Definitely, he helped us. He helped us score those goals, survive, come second on the table and stuff like that. He did that. But कितना हमें अपने गेम प्ले में स्ट्रगल करना पड़ा. We had to go direct and cross and inshallah, and Aubameyang did score important goals for us. For that, I'm thankful. But उसका जो लिंकअप था वाहियात था, उसके होल्ड अप थे वाहियात थे, उसके जो पेस थी that was also not there. That's not the way to go, man. Aubameyang को लाके बारसा, yeah, they played haram ball in a sense, man. And
Thank you to Huba. Great job, man. But please don't come back here. हो गया ठीक है. We love you. Tight चलो medal दे भाई, दे रहा हूँ मैं तुझे. Medal ले ले बाबा. चलो क्लियर हो गया आज तो भाई, मतलब हम तो अलग ही दुनिया में जी रहे थे। और अगेन भाई, टॉकिंग अबाउट डिफेंस, आई थिंक इनिगो मार्टिनेज इज ऑलरेडी कमिंग इन, तो Hmm. एरिक गार्सिया, आई थिंक, पता नहीं, आई थिंक ही शुड मूव ऑन, टू बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। देयर इज नो पॉइंट अबाउट कीपिंग एरिक Xavi गार्सिया, sees him as a सही। DM. Xavi ही DM डज, खिला रहा है लेकिन उसको. आप अगर डीएम एनीवे लाओगे ही, अगेन वो ये बैकअप Hmm. टाइप ही रहेगा, मतलब फॉर हिज Backup. करियर आई एम सेइंग, फ्रॉम हिज Yeah. पर्सपेक्टिव, फ्रॉम अ स्पेनिश इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव +1. ना, it makes sense, right? I don't think क्योंकि I think Ferran Torres और Eric Garcia, as much as वो बहुत promising signings थे, I think their career has gone little bit downside after Man City छोड़कर, तो वो एक चीज आप definitely देखो। तो I think outgoings तो 100% रहेंगे, but apart from that, I think यहाँ पर एक comment था about last check ले लेते हैं यार राजीव भाई, very good shout at that in my opinion. Coop Miners. Coop Miners is someone Hmm. who's a left-footed guy, and he's very good at set pieces as well. Is this someone that maybe, considering Frankie De Jong का Dutch connection है, would you see that with the Dutch Barca connection as well? Too many Possible. similarities. Too many similarities in that midfield. Coop Miners likes to run with Mm, the ball, likes to go forward with the ball, and basically Atlanta के लिए has played a number 8 more than he has played a number 6 correct. this year. I I agree. I I know कि he's a good player, but every good player can't be your pick, man. हर एक अच्छा प्लेयर को मैं नहीं लाके यहाँ पे बारसा पे रख दूं. प्लेयर तो अच्छा ट्रोजार्ट भी है, but can we sign him? I would kill for a Mm, Trossard in my team, man. But you can't sign him. So the thing is, he is good, he is decent enough, but too much similarity, and that's not a profile we are looking for, man. We need a mm, stagnant DM who can play as deep line playmaker, set the tone of the play, can win some balls. Kupiners be whatever it is. I think he's good, yes, but not the perfect fit यार. FIFA में आप उसको लेके रख सकते हो, but ऐसे real life agreed. में it won't work. Exactly. भाई Christensen could have done that, but I think बारसा में fit हो रहा है भाई. I don't think we need to change. Absolutely, And best anyway वो signing. गेम प्ले में करता भी है. In fact वो गेम प्ले में Yeah, करता भी है. I चढ़ता don't है. think it's an issue at all. By the way, again, definitely we can exchange gifts, bro. जब Christensen का हो गया है, I think for me, maybe I'm just guessing that Christensen can go to that level. I think Barca is that club for him, to be honest. But yes, Yeah. by talk ball ETB reach कर दिया भाई 10K, as क्या well as we have बात है reached 9K. आरामखोर. Absolutely. So hopefully we are growing with you guys, bro. Again, Almighty fam, big up. भाई काफी बातें होगी, पूरा ला लीगा हो गया. What are your expectations, Levi, from next season, and how much would you rate this season, considering technically 2 cups आए हैं, right? 7.5. I've talked about this. 7.5 रेटिंग है मेरी इस क्लब की. Hmm. द ओनली रीजन मैं यहाँ पे 8 नहीं दे रहा हूँ बिकॉज 8 से मैं ऊपर नहीं जाऊंगा. द ओनली रीजन मैं 7.5 जा रहा हूँ इट्स बिकॉज एक चीज मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट लगा था दैट द वे वी वन दोस गेम्स. एक थोड़ा सा क्वालिटी वाला एक फैक्टर हमेशा था. ठीक है, वी ग्राइंड द रिजल्ट्स, बट ठीक है, 7.5 इज नॉट बैड फॉर द फर्स्ट सीजन. सो दैट्स व्हाट आई एम गोना गिव. वी कुड हैव डन बेटर इन यूरोपा. Definitely Champions League में चलो unjust हुआ, whatever it is. Europa में we should have done better against the teams, but हाँ वो unlucky थे हम injuries की वजह से. So I'm not gonna cry about that. 7.5 for Xavi. And best signing of the season Christensen. जैसे कि already 2 महीने में मैंने ये बात बोल दी थी and I stand corrected for that. He has been rock solid for us यार. बाकी इसके अलावा next season की expectation अंकित भाई, with the hypothetical signings that we are talking about, winning the La Liga, winning the Copa del Rey, winning the Super Cup, being Barca, you have to go for every title. And the Champions League, I'll hope कि at least quarters हम जाएं, at least quarters Like is progression what is the what you would target. like to definitely see Yeah, वहां पर भी. yeah. Yeah, I understand. I think that is one of the few criticisms, apart from the way that Javi has played towards the last few weeks. वो भी है. Again, मतलब वही है. मतलब I would agree with that rating as well. लेकिन big up to the chat यार भाई. Again, Almighty fam, always a fan channel for all to see. You guys know it. Z भाई के channels को again, by chance अगर people coming late have not subscribed, consider subscribing to him as well. Both the channels are linked below. तो जी भाई, I'll see you soon. Big up to जी भाई again. हमने बहुत बात करना है. मेरा frustration अभी बाकी है निकलना. For of course Chelsea and hopefully Milan. By the way, RLC going to Milan, तो कहीं ना कहीं वहां पर हेल्प हो रहा है. तो hopefully we get a good goalkeeper Magnion. हमने बात करनी है. We'll probably get you for one of those streams as well. Mike Magnon नहीं जाएगा. Mike Magnon has to stay, and Milan also Yeah, signing agreed. Kamada, Ruben Loftus-Cheek. अच्छी डेप्थ आ रही है यहाँ Yes. पे. I think that would be crazy. मजा आएगा. और मुझे लगता है Hmm. क्योंकि वो कमाडा ला रहे हैं, feels like कि Brahim Diaz might go to Real Madrid. उसका कॉन्ट्रैक्ट है अभी भी वहाँ पे. Actually, हाँ वो पॉइंट पर भी हमने कवर किया था. आई थिंक दैट कंसिडरिंग Asensio is leaving, it makes sense for him to be a replacement, at least as a squad player. भाई अगेन थैंक्स अ लॉट. हम बात करेंगे यार. सुशांत, मैं देख रहा हूँ काफी कमेंट्स आ रहे हैं. अगेन जो भी कमेंट स्टार किया हो ना, वी कैन कंटिन्यू एंड टेक दोस कमेंट्स इन द नेक्स्ट स्ट्रीम. आप लोग वापस आइए एंड
check out बिल्कुल. Z Boys channel as well. अभी के लिए see you guys. Good night and I hope you guys like this stream. See you. Peace out, guys.